दूसरे जो माथा दोबारा जो माथा टेके उनके भी चाल अलग होने शुरू हो गए। तीसरे की अपने, चौथे की अपने, कुछ पांचवें में भी गए और 5 से ऊपर गए। ऊपर से उसकी मैं पहचान नहीं कर पाया, मगर इतना है कि 5वें से ऊपर मेरे से मिनिमम 3 सेल्फी लिए। सेल्फी कैमरा इधर, स्क्रीन में उधर का दिख रहा है, तो उसी से पता चला कि वो पांचवें में 5+। ये दमदार वाली बात है। मगर खैर क्यों ना हो, रूखा सूखा बिहार, वहां से इतनी प्यासे जो आए हैं, गीला करने में तो उतना लग ही जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया दिन हमारा कल गया, बड़ा आनंद आया, हम लोग खूब नाचे गाए झूमे। यही तो मूल मकसद है, यही तो कॉन्फ्रेंस है। फिर तो हम अपने अपने भी घर में इन्हीं अच्छी अच्छी यादों को लेके हम आगे अपनी जिंदगी की आगे की राह जाएंगे। बस रही आज थोड़ी सी देरी से शुरू हुए, मगर क्यों नहीं, रात की थकान को दूर करने के लिए कितनी कसरत करना पड़ता है। उसमें से सबसे बड़ी है कि एक अच्छी सी नींद लगवाना। तो लगवाए हम नींद, हम अभी तैयार हैं एंड वी हैव ऑफ। बस शुरू हो गई अपनी लकी ड्रॉ। 10 को मिले नहीं, 5 को मिले, बड़ा खराब लगता है। फिर सर इसके बाद हमारे एक ऐसे ही हमारे बीच में आए हैं, अपने आप से और अब दूसरों से करता हूं। हु इज ए रोटेरियन? हु इज ए रोटेरियन? आप अपने आप को हाउ कैन यू टेल यू आर ए रोटेरियन? ये सवाल हम अक्सर अपने से करते हैं, दूसरों के करते हैं, और इसका जवाब हर कोई का अपना अपना तरीका से जवाब होता है। हु इज ए रोटेरियन? मैं तो यूं बोलूंगा, मेरे मन के मुताबिक कोई भी इंसान दूसरे दुखी इंसान को देख के दुख हो जाए और दिल में दर्द हो, वो है रोटेरियन। अगर दूसरों की आंसू देखे और अपनी आंखों में आंसू आ जाए, वही है रोटेरियन। यही मूल चीज है सर। अपने आप को परख लीजिएगा, ऐसे वक्त हालात में अपने को पेश कीजिएगा। अगर आपको दुखी वक्त में दुख आया, आंसू के बदले में आपकी आंखों में आंसू आया, आप रहे तब रोटेरियन। ऐसी एक झलक हमारी मैडम जी देंगे। आवाज अपनी सुनिएगा क्या बोल रहा है, उसी में पता चलेगा कि हम एक रोटेरियन के तौर पे कितने दूर चल चुके हैं। और सर सबसे बड़ी बात है, आज हमारे कमल सांघवी जी, जो यूं तो बोले इमीडिएट पास्ट डायरेक्टर, चलिए वो बीती बात है, बट नाउ ही इज द वर्ल्ड मेंबरशिप चेयर। पूरे अक्खा वर्ल्ड का चेयरमैन है वो मेंबरशिप के मामले में। सर बोलते नहीं है, प्यार मोहब्बत वाली बात है, मगर वो हमसे खुश नहीं है मेंबरशिप के मामले में, क्योंकि जो आंकड़े वो पहले चाह रहे थे हमसे, हम कुछ नजदीकी पहुंचे मगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए वो जब अपने सोच विचार को पेश करेंगे, अपनी ज्ञान अपने साथ बांटेंगे हमारे साथ, तब हम कुछ मेंबरशिप की कुछ हेरफेर करेंगे। सब प्रेसिडेंट को मैं अगवा कर देता हूं, थोड़ी मेंबरशिप की नंबर्स हम आपसे मांगेंगे, उतनी मेंबरशिप आपको देना होगा। जितनी मेंबरशिप की आप कमिट करेंगे आज, सबसे ऊंची जो जिनका मेंबरशिप कमिटमेंट रहेगा, हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट की जादू की झपकी उनकी तरफ, उस प्रेसिडेंट से जादू की झपकी। सर ऐसा मौका मिलता नहीं है, हम भाग्यवान हैं कि हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी हैं, हमारे वर्ल्ड चेयरमैन हमारे कमल सांघवी जी हैं। तो इसी को ख्यालात रखते हुए वी विल गो अहेड। उसके बाद मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप अब बहते हुए जब इस स्रोत में बहते जाएं हम लोग, खाना पीना, फिर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो रही है। मगर ये दुख की बात है कि आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे। बस फिर हम अपनी घर चलेंगे, अपनी अपनी दुनिया में चल के अपनी फिर वही काम काज, वही खिटखिट, वही सुबह को अलार्म लगा के उठना, वही मोबाइल फ़ोन, वही सब चलते रहेगा। बट रह जाएगा क्या? ये सारी हमारी जो टीम की मेहनत से जो हम लोग आज इस तरीके से वो यादें हैं आप लोगों से, ये ऊपर वाले की दुआ से पता नहीं हम क्या किस तरीके के यादें आप तक
हम पहुंचा रहे हैं, मगर चाहते हैं कि इतनी अच्छी हो कि सारी उम्र भर हमारी दिल दिमाग में रह जाए हम एक दूसरे के लिए। थैंक यू वेरी मच। पूरा दिल से था प्रतिम। We have a lovely couple sitting in front of us, our chief guest for the entire conference, our very dear friend, past governor and Rotary International President's representative Madhav Chandran and his lovely wife Sujata. I would request you to grace the stage with your presence. I would also request our governor and First Lady Suchanda, Pratim Suchanda, please escort our chief guest to the stage. As the eminent author, Art Williams says, quote, "I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it," unquote. Today to talk on rehabilitation and beyond, we have Miss Nikki Kaur, but before I invite her on stage, I would like the tech team to please play her AV. जीऊं ऐसे मुझे देख के दुनिया कहे कि मुझे भी जीना है ऐसे, कुछ ऐसा कर जाऊं कि खुद पे नाज कर बैठूं, खुशियां बांटूं ऐसे कि बस हर जगह खुशी की महक बिखर जाए, उजालों से वो जगह भर जाए और मोतियों सी हंसी बिखर जाए। मुसीबत कोई पहाड़ जैसी आए तो मानूं जैसे राई का तिनका, और जो खुशी आए राई जितनी तो नाचूं ऐसे जैसे पहाड़ हिलाया हो कोई। मुड़कर कभी किसी मोड़ पर अपनी जिंदगी को देखूं तो लगे कुछ किया है, अपना हुनर जिया है। मेरा नाम विद्या है, मैं बिहार से हूँ। 2007 में मैं जब साइकिल चलाते हुए आ रही थी तो मैं साइकिल से गिर गई, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और मेरा आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब ने मुझे ढूंढा, मुझे अपने पास बुलाया, मुझे सम्मान के साथ जीना सिखाया, मुझे हंसना सिखाया और मुझे खेलना सिखाया, मुझे फुल ऑन ज़िंदगी एंजॉय करके जीना सिखाया। When Chandigarh Spinal Rehab was inaugurated in 2016, we lit the flame of hope. With commitment to care and intent to transform, we healed with skill and empowered with love. I'm Dr. Reni Mashke. I was very happy to see that the quality of rehabilitation at Chandigarh Spinal Rehab corresponded to international standards. And I must say, when I arrived here, I really found a very high level of quality of rehabilitation. So what sets us apart? We have infused our center
with a spirit of care and camaraderie, with picnics and outings to encourage social integration, and emphasis on all kinds of sports and adventure sports. What is more, post-rehabilitation, we have included 6 persons with spinal cord injury into the Chandigarh spinal rehab workforce, giving them dignified employment. बंदे हम उसके हम पे किसका जोर उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आज चली है हम Nikki ji, the stage is all yours, Nikki ji. Hello. Yeah. Thank you very much. I'm glad that we could share this AV with you and you could get a glimpse of our work. And I'm so very grateful to be standing here with you today, to be able to share
our journey, our dreams, our endeavor, and to share with you the fact कि जो जिंदा दिली मैंने आप सबके दिलों में देखी है इन 2 दिनों में, वो हमारे दिल में और हमारे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में भी है। और ये अलग बात है कि आपने अपने लेग्स में डांस किया, ये अलग बात है कि आपने अपने हैंड से बहुत कुछ किया। हमारे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में वो व्हील चेयर्स पे करते हैं, पर डांस वो भी खूब करते हैं। I feel so grateful to a new friend, Ronnie, for giving me this opportunity of coming all the way here and for making this small presentation. I feel humble and very grateful. And I want to share with you just one sentence before I invite my teammates here. What am I doing here? Who is this lady and what is she doing here in Jharkhand? The wonderful Jamshedpur crowd, everybody from this belt, and me from Chandigarh. What brings me here? So I would just like to say that as Rotary, the world over, is working with the spirit of service beyond self, so are we committed to empower beyond limitations. And we come before you to share our dream. And because humanity is not confined to places, humanity is not confined to different states, humanity does not distinguish us as from Punjab or from Jharkhand. Humanity embraces all. And the platform that we have created is for all. And we are proud to say that our alumni and people at Chandigarh Spinal Rehab have come from the entire country, north, south, east, west, all. And the only eligibility criteria into Chandigarh Spinal Rehab is that you have a spinal cord injury or a brain injury and you need life to turn around, and you are welcome there. That's the eligibility criteria. And before I take off to say some things for myself, I would like to invite a young man. Thank you. I would like to invite a young man. देखिए, हमारी हाइट इतनी छोटी है कि मुझे स्टूल की ज़रूरत पड़ रही है, तो व्हील चेयर वाले कहाँ से खराब हो गए? I mean, I fit into the same category. They need wheels and I need a stool. But I want to introduce you to a team member of ours whom I am proud to call my son, Ajay Raj from Jharkhand. Ajay, आपने देखा होगा कि एक व्हील चेयर में कोई इधर उधर घूम रहा है, तो ये मेरा हीरो है. And to introduce Ajay Raj, I would like to say that he is a tetraplegic, 98% paralyzed, neck down, कुछ भी नहीं चलता, neck के ऊपर 10 times चलता. He's a phenomenon and someone we at Chandigarh Spinal Rehab are extremely proud of, because when he came to us with his 98% disability, he came with a spirit to say, when I asked him, what is your dream? और तुम क्या चाहते हो? And he said, मुझे जॉब चाहिए. ये इनकी स्पिरिट थी जिन्हें हमारा सिर झुकाया, because he didn't think of his limitations. He had his lakshya. He knew what he wanted from life, and it was our duty to provide that platform to him, and we did. So at Chandigarh Spinal Rehab, Ajay is the food and beverage manager. He handles our Facebook, and he is my backbone, my spine. Ajay Raj. एक और बात तो मैं बोलना ही भूल गई. Ajay Raj has gone to Dubai last 2 years representing India in an international sport, and this year he has been selected to go to China for the Asian Games. Over to you, Ajay.
Hello. So, first of all, thank you so much to everyone and special thanks to रोनी सर जिन्होंने हमें एक मौका दिया आपके इस जम्बोरी क्लब जम्बोरी रोटरी जितने हैं आप सब इकट्ठा हुए हैं आप सबके बीच एक अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए बिफोर मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं। दिव्यांग नहीं समाज का दिव्य अंग हूं मैं। दिव्यांग नहीं समाज का दिव्य अंग हूं मैं। अपने माँ बाप के बोझी आशाओं की एक छुपी एक उमंग हूं मैं। अपने और समाज में अपने जगह पाने का कर रहा जंग हूं मैं। अपने माध्यम से भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उमंग हूं मैं। अपने इस विकलांगता के माध्यम से आप सबों को कर रहा नमन हूं मैं। दिव्यांग नहीं समाज का दिव्य अंग हूं मैं। थैंक यू। मेरा नाम अजय राज है और मैं झारखंड के गढ़वा ज़िला से बिलोंग करता हूं। मैं बाइक एक्सीडेंट से गिर गया था, उसके बाद से गर्दन के नीचे का जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो गया। आप देख पा रहे हो कि मैं सिर्फ आपसे बात कर सकता हूं और अपने इस व्हीलचेयर के माध्यम से जैसे आप चलते हैं वैसे मैं भागता हूं। सो एक समय था जब मेरे पिताजी को लोग ताना मारते थे कि आपका जो बेटा है वो तो एक डेड बॉडी है और इस डेड बॉडी को एक एबल बॉडी बनाया। जिसने एबल बॉडी बनाया वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने बनाया। जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे, जो बोलती हैं कि मैं माई सन अजय राज, रियली इनका सिर्फ एक बेटा नहीं हूँ मैं। इनके हम जैसे और भी हैं जो भी चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में आते हैं, रिहैब लेते हैं, सब इनको मम्मा करके बुलाते हैं। क्यों? एक माँ का दर्जा देना बहुत बड़ी बात होती है। हम दोस्त बना सकते हैं, आंटी बोल सकते हैं, अंकल बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं, लेकिन एक माँ बोलना एक अलग का फील होता है। हाँ, सो थैंक यू सो मच मम्मा। एंड मैं अपनी जर्नी में बताऊं कि 2006 में मुझे चोट लगी थी और अब मुझे 16 साल हो गया अपने इस लाइफ में, लेकिन मैंने कभी अपने आप को कोसा नहीं, अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, लेकिन है वही जो आप सब जीते हो। सो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में आने के बाद हमें इतना इंस्पायर किया गया। मैंने यहाँ आने के बाद डीप सी स्कूबा डाइविंग किया। मुझे नहीं लगता आप में से बहुत गिने चुने लोग होंगे जो डीप सी स्कूबा डाइविंग के बारे में सोचा भी होगा, सुना भी होगा या किया भी होगा। लेकिन इस विकलांगता के बाद भी हमें अपने रिहैब सेंटर, अपने स्पाइनल रिहैब में इंस्पायर किया जाता है। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि हम अपने विकलांगता को लेकर लाचार और बेबस हैं। हमें ये एम्पावर किया जाता है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। सो थैंक यू। लास्ट में मैं एक और 2 लाइन बोलना चाहूँगा। हासिले ज़िंदगी में हसरतों के सिवा और कुछ भी नहीं। ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला। इसलिए जनाब जो है उसको हासिल कीजिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। मैं बिना इजाज़त के एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे अभी अभी याद आई। आप बोलिए, किसी माँ का सिर इससे ज़्यादा फ़ख्र से नहीं ऊंचा होगा। उसके बेटे को स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है फ्रॉम दिस ऑगस्ट गैदरिंग। आई फील सो ग्रेटफुल एंड सो प्राउड। मैं छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे अभी जस्ट याद है जब अजय राज सुना रहे थे कि इन्होंने स्कूबा डाइविंग भी की है।
हम लोग सारे अपने पेशेंट्स को पौंडीचेरी ले गए थे, स्पेशली स्कूबा डाइविंग पोर्शन के अंदर जाने के लिए, और मुझे अलाउ नहीं किया गया क्योंकि मेरा हाई ब्लड प्रेशर था। उन्होंने कहा आपके लिए डेंजरस है, बट अजय राज कुड डू इट। तो अब बताइए दिव्यांग कौन है, विकलांग कौन है? तो हम लोगों से ये ज़्यादा एबल्ड बॉडी है। ये अचानक मुझे ख्याल है जब इन्होंने स्कूबा डाइविंग का जिक्र किया। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। थैंक यू। I want to take the liberty of making everybody do a small exercise with me. क्योंकि जो हम इतनी दूर से आए हैं, कुछ कहने आए हैं, कुछ शेयर करने आए हैं और एक मैसेज लेकर आए हैं। सो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर 1 मिनट के लिए सब लोग अपनी आंखें बंद कर दें। कैन यू प्लीज़ क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट? Just 1 minute maximum, 60 seconds. And I will take you through a small journey in this 60 seconds. If you could close your eyes and imagine that you're in a party and a lot of fun and partying, fantastic food, good fun, music and dance. And suddenly आप अपने रूम में जाते हैं, वहाँ बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं और जब आपकी होश चले जाते हैं, जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड में पाते हो और वहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज और आपके फैमिली रो रहे हैं। और जब आप पूछ रहे हो कि मुझे उठना है, वो कहते हैं आप उठ नहीं सकते। आप कहते हैं मुझे घर जाना है, वो कहते हैं अभी तो समय लगेगा। और रास्ते से आपको पता चलता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है और अब आप पैरालाइज्ड हो गए हो एंड यू विल नेवर बी एबल टू वॉक अगेन। कैन यू इमेजिन द शॉक? दैट इज़ ओनली वन स्मॉल शॉक। आफ्टर दैट यू आर टोल्ड कि आप कभी अपने आप अपना यूरिन और मोशन नहीं पास कर पाओगे। आपको एक कैथेटर से अपना यूरिन निकालना पड़ेगा और आपको अपने रेक्टम से मोशन फिज़िकली हाथों से निकालना पड़ेगा क्योंकि मसल कंट्रोल ख़त्म हो गया है, स्किन सेंसेशन ख़त्म हो गया है। कैन यू इमेजिन अ लाइफ इन 1 second like that? How do we deal with it? And how are the millions dealing with it in our country and all over the world, जिनको इस हादसे से निकलना पड़ा? Because spinal cord injury does not come with a warning. It comes with an accident or a trauma. A bullet injury, a trauma, a road accident, a fall. आज की डेट में एक इलाहाबाद के लॉयर हमारे सेंटर में आए हुए हैं जो ऐसे ही एक पार्टी में जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चक्कर सा आया और वो गिर गए और सर्वाइकल लेवल की उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। जस्ट 1 second। एंड देन लोग क्या कहते हैं, हाय बेचारा डिसेबल्ड हो गया, दिव्यांग हो गया, विकलांग हो गया, और बेचारा करके हम इनको बेचारा ही बना लेते हैं। समाज कहती रहती है हाय बेचारा और वो सोचता मैं बेचारा। तो आज मैं आप सबके आगे इसलिए आई हूँ कि you all are working in so many fields. I, as a very, very small instrument, a very, very small human being, come before you with this big endeavor. मेरे को सांगवी साहब ने बताया कि आप लोग इलिटरेसी इरेडिकेट कर रहे हो। कल से सुना मैंने इलिटरेसी, पोलियो इरेडिकेट हो गया, इलिटरेसी इरेडिकेट हो गया। क्या आप सब हमारा साथ देंगे और हम ये बेचारा मेंटालिटी इस देश से हटा देंगे? Can you help me? Can we do this together, please? Yeah. This is our endeavor. This is why Chandigarh Spinal exists. We have only 30 beds, but we are growing to a much bigger center because the waiting lists are endless.
From all over the country, phones आते रहते हैं, and we don't have more beds, so we can't accommodate. हमारे दिल बहुत बड़े हैं, जगह छोटी है, so हम बहुत बड़ा सेंटर बनाने की ख्वाब देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. आप सबका साथ होगा तो ये सपना भी साकार होगा. And together we will be able to transform the future of disability in this country, and I promise you we will. If God gives us life, together we will. Alone, I might not be able to. It's a daunting task. So I'm here before you for two reasons. One is with my appeal to remove the bichara mentality, and secondly, to reach out for your support. Please help us in any way possible. And secondly, एक और बात छोटी सी, आज अगर अजय राज का कोई मुझे पहचान पूछेगा और पूछेगा हु इज़ अजय राज, तो मैं बोलूँगी कि अजय राज इज़ अ हीरो. वो एक सूरमा है, उसने जीना सीख लिया है और अब वो औरों को जीना सिखा रहा है. वो एक लाइट हाउस है जो औरों की ज़िंदगियों में रोशनी देता है. उसने अपनी खुशबू को बरकरार रखा है और अब वो महक चारों ओर फैल रही है. इट जस्ट सो हैपन्स कि ये अजय राज व्हील चेयर पे है, ये उसकी पहचान है. और मैं ऐसा चाहती हूँ that every mother should be able to say this for her son, कि उसने अपनी पहचान बनाई है, वो so and so है. वो सिर्फ दिव्यांग, विकलांग, बेचारा नहीं है. हर एक के अंदर वो दिव्य अंग है, वो दिव्य ज्योति है. And if we see that ज्योत, तो आप कभी किसी को तरस करके कुछ मत दीजिए. ये तरस नहीं चाहिए किसी को, empowerment चाहिए, प्यार चाहिए. Give them your strength. I see everybody in this hall, all the lovely ladies. My God, I've been admiring you all for 2 days. But all the lovely ladies and men here, कोई और व्हील चेयर पे नहीं है. And I'm sure आपके families में भी कोई व्हील चेयर पे नहीं है. So isn't that reason to be so grateful to God? So what we need to do is to give in the name of love and gratitude. Please let whatever you do, whatever you give, whatever you share, be in the name of love and gratitude and nothing else, because everything else is drama. Let's just give and share in the love, in the spirit of love and gratitude. So I come, a very simple mother, a very simple lady with folded hands in front of you, to say, हमारे देश में बेचारगी की ज़रूरत नहीं है, empowerment की है. आप सब साथ दें, and together we can build a more empowered India. Thank you. Thank you very much. I also wanted to introduce, because this is a Rotary gathering, and the spirit of giving is so important in Rotary, I had to introduce to you another member of our team, Mr. Varinder Saluja, again from Jharkhand. आपके रांची के ही हैं ये. पता नहीं कैसे भगवान ने चंडीगढ़ को खींच लिया. तो he has visual impairment, so very visually challenged, but देखिए कुदरत का करिश्मा, thank you, कि किस्मत इनको भी वहाँ ले आई. And today he has been the biggest financial pillar of strength for Chandigarh Spinal Rehab. और जब बड़े बड़े organizations देते हैं ना, तो बड़े लोग छोटी देते हैं, वो भी बड़ा लगता है. लेकिन इस शख्स ने अपना सब कुछ दिया, अपने शेयर्स तक बेच डाले, सब कुछ बेच डाले, ताकि इनकी लाइफ और ये जगह provides the platform to so many. Because we know brain injury and spinal cord injury are immensely challenging.
And as he kept seeing the cause, his commitment to the cause kept growing. And this man, when there was a need and we knew और कहीं से भी कोई support नहीं आ रहा, इस शख्स ने अपने आप को दिया, सब कुछ दिया. And that's very rare. So very, very rare to see one individual give so much and so freely. So we are extremely honored to have him as our very senior trustee also. Friends, I simply feel embarrassed actually. I've hardly done anything because to my understanding, money is a very, very small thing. What is the real thing in life is your love and compassion, which Nikki madam has said. I stand nowhere. पैसा तो मैंने देखा कईयों के पास है. I'm very, very humble to say that it's my privilege. And it's rather, I am thankful to Chandigarh Spinal that मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ मैं जो छोटी सी चीज़ मेरे पास से शेयर कर सकूँ. इतना प्यार, इतनी डेडिकेशन तो मुझ में नहीं है. पैसे को मैं सबसे तुच्छ समझता हूँ. Unfortunately, people are clinging to it, and fortunately, I'm not clinging to it, so हमको भाव मिल जाता है. मगर इस चीज़ में कोई बहुत माने नहीं है. ये मुझे realization बहुत पहले आ गई कि my biggest hindrance to my inner being is the money. If I get rid of it, then only I can carry forward my spiritual journey, which I am into. So I am thankful to Chandigarh Spinal and privileged also. Please don't ever think that पैसा देना एक बहुत बड़ी चीज़ है. ये तो ऊपर वाला पैसा तो मुझे लगता है मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि मेरे पास पैसा छोड़ के कुछ भी नहीं था. तो मैंने कहा कम से कम ये तो शेयर कर लूँ. That's all. Please, thank you. अमेजिंग अमेजिंग निकी जी, सबके आंखों में आपने आंसू ला दिए. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए निकी जी, अजय राज के लिए और भाई साहब के लिए. रियल आई ओपनिंग. सर, मैं माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हम जो अपने तरफ से मदद कर सकते हैं पैसों के साथ, मैं चाहूँगा डीजी प्रतिम जी कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं. इसे हमारा भेंट समझ के प्लीज़ ले लीजिएगा. प्रतिम. यही है रोटरी. हम सब एक अजीब सा फीलिंग से हम गुजर रहे हैं. क्यों? यूं मैं आपसे एक परमिशन मांगता हूं अभी तुरंत हाथों हाथ. क्या आप हमको परमिट करेंगे कि हमारे रोटरी 3250 से उनको एक छोटी सी 1 लाख रुपया की राशि, एक चेक अगर आप उनको दें, अगर आपकी इजाज़त हो तो आई विल गिव इट टू हर. सर, अगर इजाज़त हो सर. ये एक शुरुआती है. मैडम, अब उनकी भी परमिशन लेनी होगी. मैडम जी, निकी जी, आपकी परमिशन चाहता हूँ कि अगर हम सब मिलके अभी आपको 1 लाख रुपए की अगर राशि दें, ये पहली आपकी इजाज़त चाहते हैं, अगर आप हमारे स्वीकारें. दूसरी बात है कि हमारी जो बैचमेट है रोटरी डिस्ट्रिक्ट की चंडीगढ़ ये के, मैं उनसे कोऑर्डिनेट करूँगा. हम हैं दूर में, दूरी से हम क्या कर सकते हैं. हमारे बैचमेट जो आपके करीब हैं वो आपके पास रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं. बट प्लीज़ बी एश्योर्ड वी आर देयर विथ यू. हमारे डिस्ट्रिक्ट में रांची के एक डॉक्टर अनिल पांडे हैं, वो भी इस किस्म के ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं. पॉसिबली वी मुकेश, डॉक्टर अनिल पांडे विल बी अ वेरी गुड पर्सन टू बी कनेक्टेड विथ हर. एंड वेयर आपकी नॉलेज से उनकी शेयरिंग, उनकी नॉलेज से उनके आपके लिए, आई थिंक इट विल बी अ गुड centers for the 2 centers to support
सप्लीमेंट एंड सपोर्ट ईच अदर, तो वो भी मैं शुरू करवा दूंगा. डॉक्टर अनिल पांडे, आई एम वेरी कीन एंड आई फॉलो अप फ्रॉम आर रोटरी डिस्ट्रिक्ट. वो आप ही की तरह कर रहा है, पर थोड़ी सी हट के. ही इज़ मोर इनटू पोलियो एंड कुछ इश्यूज हैं. सो मैं अगर इन दोनों बातों की इजाज़त हो तो हम बहुत आभार होंगे. Wow. Nikki ji, that was amazing. हॉल में कोई एक ऐसी आंख नहीं होगी जो कि नम नहीं हुई हो. आपकी डेडिकेशन को देख के आपको सल्यूट करते हैं हम लोग. हम रोटेरियंस हमेशा सोचते हैं कि हमने एक छोटा काम करके हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो एक समुद्र में छोटी सी बूंद के जैसे है. वी सल्यूट टू योर लव विच यू आर शायरिंग अपॉन एवरीबॉडी. I request DG Pratim to honor Nikki ji with some gratitude. Ajay Raj ji, salutes to you too. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के यहाँ सब में बहुत पॉजिटिविटी भर गई है. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sirs and ma'am. We have IPDG Rajan. He wants to make some announcement, I think. Good morning, friends. Governor Pratim has taken on a district grants project for putting up water tanks, 200-liter water tank, which is filtered water will come. It's a community water tank. And we have 106 clubs in our district who have been requested to participate in this grant. अब वो वाटर फिल्टर जो है एक कल बिपिन चचान के प्रयास से आया है और बाहर स्टॉल में लगा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं. एज ए DGSC आई हैव टू वर्क ऑन दिस ग्रांट एंड अभी तक लगभग 85 क्लब्स ने ही उस पर एप्लीकेशन दी है. आई थिंक बाय एंड ऑफ अप्रैल वी विल बी फाइलिंग दिस एप्लीकेशन और मई में उसके लिए सैंक्शन आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग शुरू कर देंगे. एंटिसिपेटरी हम लोगों ने कंपनी को ऑर्डर दे दिया हुआ प्रोडक्शन का, सो थिंग्स आर इन प्लेस, ये आ जाएंगे सारे. तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर जाके एक बार देख लें और 106 में से 85 के अलावा जिन क्लब्स ने इसके ऊपर अभी तक एप्लीकेशन नहीं दी है वो जल्द से जल्द इसके ऊपर एप्लीकेशन दे दें. और एक चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हम देंगे सिर्फ उसी क्लब को जिसकी डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड 100% करेक्ट होगा.
किसी के भी MOU में अगर कहीं भी कोई कंप्लीट नहीं है तो उस क्लब को हम लोग ये सैंक्शन नहीं देंगे. तो फ्रेंड्स, टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल बाय अप्लाइंग फॉर दिस ग्रांट. थैंक यू. Thank you, Rajan. Tech team, can we have the lucky draw, please? See your names roll on the stage now for the lucky winner. Rotarian Bridge Kishore Prasad from Ara. Are you in the hall? I don't think so. Next one, please. Rotarian Ashish Das, Jamshedpur Midtown. Can I request past Rotary International Director Kamal Sangvi to please do the honors? Round of applause for the lucky winner, friends. Can we have the next lucky draw, please? Kamal will request you to be outside. Maybe your name comes, Kamal. No. I think he's gone. He's not there. Amresh Sinha from Jamshedpur. We can have the next one, please. Okay, that's Rotarian Kamal Sangvi. Sorry. Rotarian Pavan Goel from Ramgarh. Yes. Yes, we have him in the hall. We'll have one more lucky draw. One more lucky draw, please, fast. Kamal, I request you to be here. This is the last for this session. I mean, this time. Rotarian Bijay Singh from Giridih. He is not there. Next one, please. Rotarian Vinod Kumar Chaudhary from Patliputra. Yeah, he's there. Congratulations. Sudhaji. Sudhaji, can you please be on the stage? Wow, that's beautiful. Congratulations. Thank you so much, Kamal.
growth is never by mere chance. It's the result of forces working together. Before we have our World Chair, past Rotary International Director, Rotarian Kamal Sangvi, dwell upon each one, bring one, may I request for the AV introduction of Kamal sir. Friendly, smiling, or rather laughing, cheerful always, adventurous, hard-working, helpful, dependable, and meritorious. That's how you would best describe Kamal Sangvi. Truly a star. This star, born to Chandrakant Bhai and Pushpa Sangvi on 2nd January 1961 in Dhanbad, Kamal studied in Darjeeling and graduated from Kasturba Medical College, Manipal. Shairana mizaj ke hamesha hi the, so he found his love of life in Sonal while in college. Sonal is a qualified architect and helps Kamal in the family-owned construction business. Kamal also owns a bank by the name of Virji Bank. Kamal and Sonal have two wonderful children, Khwab, who is pursuing PhD in cancer cell biology in Germany, and Ravishu is studying in MIT Manipal. Kamal joined Rotary Club of Dhanbad in the year 1991, was the club president in the year 1998-1999, and the district governor in 2005-2006. Kamal has been the Vice Chair Rotary India Literacy Mission and the Founder Trustee Rotary India Humanity Foundation. Kamal has been at the helm of organizing some of the most outstanding events of Rotary in South Asia. Prominent among them is the Mega Summit at Hyderabad, which he chaired with more than 5,500 delegates. He has been chair of the Rotary Institute Kolkata 2011, chair Rotary South Asia Summit 2013, and HOC chair for the Presidential Conference 2016. He was an international training leader for 2 years, Regional Rotary Foundation Coordinator RRFC, and Regional Public Image Coordinator RPIC for 3 years, and he has also been GETS trainer for 6 years. Kamal has led from the front when it comes to disaster management, whether it was with shelter kits in Bihar or in earthquake-torn Nepal. His passion for heart surgeries through the Rotary India Humanity Foundation led him to ink the Aman Ki Asha agreement between Pakistan and India for Healing Little Hearts program for operating Pakistani children in India for heart diseases. He has been a pioneer of vocational training centers, having helped set up 28 such centers in his district, namely Saheli centers. Kamal and his spouse Sonal are level 2 major donors to the Rotary Foundation. Kamal is a recipient of the Service Above Self Award and 4 Avenue Service Award of Rotary International, Citation for Meritorious Service and Distinguished Service Award from the Rotary Foundation. Kamal is a far-sighted, highly popular leader. Ladies and gentlemen, it's a privilege to present a Rotarian par excellence, the Director of Rotary International from India, Rotarian Kamal Sangvi. Steal the show, Kamal. Hello, yeah. So, good morning. Can we all stand up, please? मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से दोहराऊंगा, रोटरी प्यार मोहब्बत और इश्क की कहानी है. प्यार बांटिए और प्यार का एहसास कीजिए. So I want each one of you to turn around and shake hands with another Rotarian and make friends with him. Can you all do that? All right, thank you. कितनों ने दूसरी की बीवियों के साथ हाथ मिलाया? ये एहसास ही कुछ अजीब होता है कि अपनी वाली से नहीं दूसरों की बीवियों से हाथ मिलाए. तो देखिए वो हरे, just stand up, that हरे कुर्ते वाले. Look at him beaming. Just turn around. Just turn around. देखिए सब उनकी हंसी को देख लीजिए. Thank you so much. I think this is what it's all about. So we had these lucky draws today. आज एक बहुत सारे lucky draws हुए.
आज का सबसे बेहतरीन लकी ड्रॉ क्या था? कैन एनीबडी टेल मी? सबसे बेहतरीन लकी ड्रॉ? यस, this opening session before that. Thank you, Veena. आज का सबसे, कैन एवरीबडी हियर मी? कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम प्लीज? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें प्लीज. या, इज दैट ओके? आई एम ऑडिबल? आज का सबसे बेहतरीन लकी ड्रॉ जो हम सब रोटेरियंस के लिए आज हुआ है, वो है निकी कौशल जी और उनका बेटा अजय. कैन वी ऑल स्टैंड अप एंड गिव अगेन अ राउंड ऑफ अप्लॉज? दैट इज आवर लकी ड्रॉ. थैंक यू निकी जी. नो, बड़े लोग वो नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते हैं. बड़े लोग वो नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते हैं. बड़े वो होते हैं जो अपनी शर्तें बदल देते हैं दूसरों की जिंदगी को खुशनुमा करने के लिए. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट निकी इज डूइंग. एंड निकी, आई बाउ माई हेड टू यू. आई बाउ माई हेड. And we all, on behalf of each and every Rotarian here, we bow our heads to what you do and what you continue to do and strive. And let me just tell you that it is extremely and big honor for all of us that we breathe the same air that you breathe. Thank you so much for being with us. और इस शैली में, before I start my talk, I would ask DG Pratim to please join me. DG Pratim. सो डीजी प्रतिम ने कहा कि उन्होंने एक छोटा सा तोहफा या सप्रेम भेंट दी हमने निकी जी के लिए. निकी, आई वांट टू ऐड टू दिस. वी विल ऐड टू दिस दैट आई हैव द एक्सट्रीम ऑनर ऑफ इनवाइटिंग यू टू द हैदराबाद कन्वेंशन. ऑन बिहाफ ऑफ प्रतिम आई एम डूइंग दैट. माय गवर्नर हैज रिक्वेस्टेड मी, एंड व्हेन अ गवर्नर रिक्वेस्ट वी नेवर टेल नो टू अ गवर्नर. एंड ऑन बिहाफ ऑफ सुचंदा प्लीज जॉइन हियर प्लीज. So, on behalf of both of them, I have the greatest honor to invite you to a president. ये दुनिया के 7 presidential conferences होती हैं. हमारे world presidents asked for it, and this year we have it in Hyderabad, जहाँ 3,000 Rotarians इकट्ठा होंगे. प्रतिम जैसे 140 governors होंगे वहाँ पे. 40, 40, 40, the 3 lot. And the 40 who have just finished their governorship, and of course all the world leaders and India leaders will be there. So I would want you, Ajay, and what was the gentleman's name? Balwinder to be there. And I promise you, what you asked, जो आपने हाथ जोड़कर विनंती की, उसकी लाज हम रखेंगे वहाँ पे. I promise you that कि उसकी लाज रखेंगे. Thank you. सो निकी जी के लिए थोड़ी सी बात फिर से. खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त, खूबसूरत है हाथ, खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी के सांस, किसी के सहारा बन जाए. खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाए. खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाए. खूबसूरत है वो आँखें जिसमें किसी और के सपने समा जाए. खूबसूरत है वो आँखें जिसमें किसी और के सपने समा जाए. खूबसूरत है वो दिल, खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाए. I think this is absolutely what Rotary is all about, service above self. And each one of you, I commend each one of you. मैं हमेशा कहता हूँ कि you Rotarians are the angels of giving. You Rotarians are the ones who make the world run. क्योंकि आपने बीड़ा उठाया है कि हम दुनिया को बदल देंगे. आपने बीड़ा उठाया है कि service is our job, service is improving the mankind. ये हमारा धर्म है. And that is why I always congratulate each and every Rotarian for what you are doing, what you conceptualize and what you continue to do, because
दिस इज द शुल्क यू पे फॉर योर एग्जिस्टेंस ऑन दिस वर्ल्ड। ये आपका एक समाज का शुल्क है आपके ऊपर, ताकि आप, और ईश्वर की इनायत है आपके ऊपर। बहुत कम लोग होते हैं जिस पे ईश्वर की इनायत होते हैं कि वो दूसरों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। आप सब उन ख्याति प्राप्त लोग हैं जो दूसरों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। एंड किसी ने, आई थिंक समवन सेड, मनी कांट बाय एवरीथिंग। समवन सेड दैट, आई थिंक Pratim you said it or someone said it today. Nikki said that? Okay. उन्होंने कहा कि मनी कांट बाय एवरीथिंग। एकदम गलत, एकदम गलत। Money can buy everything. Your money can buy everything. They can buy दूसरों की खुशियों आप खरीद सकते हैं आपके पैसे से। So use your money wisely. मनी हमेशा, मैं कहता हूँ, गोबर की तरह होता है। पैसा गोबर की तरह होता है। अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बदबू मारने लगता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करे और दीवालों पे लगा दे, हमारे बिहार झारखंड में गांव वाले अपनी दीवार पे गोबर लीपते हैं, तब वो एंटीसेप्टिक बन जाता है। सो मनी कैन बाय एवरीथिंग। गिव योर मनी, गिव मी योर मनी एंड आई विल बाय। किसी और की खुशियां हम बाय करेंगे। सो प्लीज प्लीज डोनेट जेनरसली टू द कॉज ऑफ द वर्ल्ड। सो हाउ वाज यस्टरडे? अच्छा था? कितनों ने वो लूची और वो आलू की सब्जी खाई? कितनों ने टोस्ट और चाय खाया? कैन यू ऑल रेज योर हैंड? यार प्रतिम इतना अच्छा कर रहा है ना, आप इतनी बड़ी मंद आवाजों में बात करते हैं। हाउ वाज यस्टरडे? गुड, जोर से। जलेबियां किसने खाई? तो आपसे पूछ रहा हूं, कैसा था यस्टरडे एंड टुडेज ब्रेकफास्ट? कैन वी गिव इट अप टू प्रतिम एंड सुचंदा फॉर दिस fantastic day yesterday. So Pratim, चमक सूरज की नहीं। So Pratim and Suchanda, चमक सूरज की नहीं, ये तेरे किरदार की है। चमक सूरज की नहीं, ये तेरे किरदार की है। खबर ये आसमान के अखबार की है। Pratim and Suchanda, चमक सूरज की नहीं, तेरे किरदार की है। खबर ये आसमान के अखबार की है। तू चले तो तेरे संग ये कारवां चले, तू चले तो तेरे संग ये कारवां चले। बात गरूर की नहीं, हम सब के एतबार की है। इज इट राइट? इज इट राइट? ऑलराइट, सो कैन यू ऑल रेज योर हैंड्स। अब अचानक सोचे कि रोटेरियंस के हाथ ही नहीं हो तो क्या होगा? Suppose, like Nikki said, you don't have a spinal, have an injury, what will the person? I'm asking that suddenly all these hands vanish. तो रोटरी कैसे चलेगी? Suddenly you have this fantastic conference और यहाँ खाली सीटें हो, तो ये कॉन्फ्रेंस की हालत कैसी होगी? How would this conference be? Can anybody tell me क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस का अगर हमारे हाथ मंद हो जाएं और हमारे सीटें खाली हो जाएं? तो ये कैसी कॉन्फ्रेंस होगी या रोटरी कैसी दिखेगी आपको? एनीबॉडी? बॉडी विदाउट सोल। फैंटास्टिक, बॉडी विदाउट सोल। आप मेंबर्स हमारे रोटरी इंटरनेशनल की आत्मा हो। एब्सोल्युटली व्हाट इज सेड, यू आर द हैंड्स। जो निकी चाहती है कि वी हेल्प हर, अगर हमारे पास हाथ ही नहीं होंगे, हमारे मेंबर्स, कैन यू जस्ट शट दैट डाउन प्लीज, हमारे मेंबर्स ही नहीं होंगे तो हम वो ईश्वर का काम ही कैसे करेंगे? हम बंदे ईश्वर के बंदों के लिए कैसे काम करेंगे? ईश्वर की रचना के लिए कैसे हम इस देश को कैसे खुशनुमा बनाएंगे? हमारे गलियों को कैसे खुशनुमा बनाएंगे? एंड दैट इज व्हाई फ्रेंड्स आई ऑलवेज से मेंबर्स आर द ओनली सस्टेनेबल एसेट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। इनवेरिएबली लोग ये कहते हैं कि we are, Bharat, what do you think is Rotary? Can you describe Rotary in one sentence? Bharat, what do you think Rotary is? Peace, people, project, Rolia, President's representative. What do you think Rotary is all about? Platform to
Can somebody give the presidents a reps? As a Rotary is a platform for good people to get together to do good things. Fantastic. Can I ask somebody in the crowd, what do you think? What type of an organization are we? Anybody in the crowd? कैसी हम कैसी संस्था है? मुकेश. Quickly. कैसी संस्था है? What do you think Rotary is? किस type की संस्था है? Rotary is a voluntary organization to bring about change in our societies and communities. Fantastic. Voluntary organizations to bring about a change. Yes, somebody here. Mahesh. Yeah. Individual development through community betterment. Individual development through community development. Thank you, Mahesh. Yes, Dipali. It's a congregation of humankind put together to put their service, undaunted service, selfless service. Selfless, बोलती है selfless service organization है. Anybody else has got a different opinion about Rotary? Yes. Having opportunity to interact with wonderful people like you and all to do wonderful things. Having an opportunity to interact with wonderful people like Pratim and Sandeep Narang. Yes? Probably, right? Sandeep, can you just rise, and probably I would also want the governor nominees. Both of you rise here. Thakur Sahab. ये ठाकुर साहब हैं, एक गलती कर दी तुम लोगों ने, ठाकुर को इलेक्ट कर दिया गवर्नर बनने के लिए. बट जब ठाकुर बन गया है गवर्नर, तो क्या कहेगा वो? What will ठाकुर say? चलो दुनिया बदल देते हैं. Yes, this is what Thakur is all about. Thank you, Thakur Hello. Sahab. Thank you very much. Yes, Kamal. Yes, Rajan. Come. People of action, fantastic. There is this small kid who wants to say, yes, बच्चा इधर आ जा. तू इधर आ जा, दौड़ के आ जा. Come here, fast. Service above self. Fantastic. नाइसा. Maisha. नाइशा, क्या नाम है आपका? Maisha. Naisha. So let's give it up to Naisha for saying that ये हमारा motto है. But Naisha, thank you so much. Naisha. Okay, all right, thank you. Okay, Kamal, 1 minute. So, yeah. Can I say something? Kamal, can I say something? Yeah. Yeah, please do. Can we have that light switched off, please? And just tick me here. How many minutes do I have? Rotary. I don't want to overshoot. रोटरी एक ऐसी संस्था है जो दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करती है. रोटरी ऐसी संस्था है जो दूसरों की चेहरे पे मुस्कान लाना चाहती है. Thank you very much, Sangeeta. Sir, one thing I would like to say. Yes, Deepak. रोटरी एक ऐसी संस्था है जिसने मुझे चार मीनार से मिलाया जो मैं जिंदगी में नहीं मिल सकता था उनसे. ये रोटरी एक संस्था होती है. Fantastic. So now everyone is hall में, हर इंसान ने, हर रोटेरियन ने रोटरी को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोटरी न सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. सर्विस अबव सेल्फ हमारा मोटो है. इट्स नॉट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. सो आई वांट टू रीइटरेट टू एवरीबॉडी, रोटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. रोटरी इज अ मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस इज अ प्रोडक्ट. कितने लोग इंडस्ट्री चलाते हैं यहाँ पे? हमारा रॉ मटेरियल है मेंबरशिप, हमारा फिनिश प्रोडक्ट है सर्विस. सर्विस फॉर मेकिंग अदर पीपल हैप्पी. इज दैट वेरी क्लियर? अब मेंबर है तो मेंबर कैसे लाएंगे? अक्सर जब मैं कहता हूं कि चलो मेंबरशिप बढ़ाते हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं सर, मेंबरशिप बढ़ा के क्या फ़ायदा. हम एक अच्छे दोस्त हैं, हमारा 20 मेंबर का क्लब है, and we are very happy with it. We are happy, we are joyous, we enjoy our fellowship. Absolutely. Enjoy your fellowship. So आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, कितने के पास एक बच्चे से ज़्यादा है? Can you raise your hand? Can you raise your hand? Yeah, just keep it raised. पहले बच्चों के बाद या आपके जब पहला बच्चा हुआ था, आपने रोक क्यों नहीं लगा दी?
ऑटोमेटिकली हो गया क्या? तो दीपाली, We never planned for a second child, but the first child, when he was 5 years old, and when he used to see his siblings coming to his school, he said, Mom, I want a brother or a sister. दीपाली कहती है कि पहले बच्चे ने क्या कि मॉम आई वांट वन मोर ब्रदर और सिस्टर. यस वीना, यू वांट टू से समथिंग. पहले बच्चे के बाद क्यों नहीं रोक लगा दी? We always wanted a second child because we wanted a companion for the first one. Fantastic. This is what I want. Companion. दोस्तों, why stop? Can you imagine अगर आप सब members बनना बंद कर दें, and if you don't get one more member into this organization, हमारी organization कहाँ चली जाएगी? क्या हम बंद कर देते हैं? क्या दूसरा बच्चा नहीं लाते हैं ये सोच के कि भाई मेरा पहला बच्चा सबसे अच्छा है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, हम खुशहाल इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते? This is it? No, the more the merrier. More the members, the more service we can do. The more service we do, the better the world becomes. And अगर service करनी है तो हमें 2 हाथ नहीं 40 हाथ चाहिए. Yes, I agree कि आपका एक club है, which probably you find it's your realm, it's your kingdom, it's your area of where you do this fantastic work. Amazing. Don't bring new members into your club. I'm agreeable to that. But क्या एक और क्लब खोलने से आप बाधित हो क्या? क्या एक और क्लब खोलने से आप बाधित हैं? Can you open another club of 20 more members? Open a satellite club. Rotary is expanded. Rotary ने अपनी सोच बदल दी. चले गए वो पुराने सोच. I think Ronnie will beat me up for this and probably the elder PDGs. But yes, Rotary has changed drastically. चले गए वो दिन जब हम attendance के रूल के बारे में बात करते थे. अब engagement की रूल के बारे में बात करते हैं. Attendance is no more important. As the world membership chair, I'm telling you on our platform, attendance is not important. It is the engagement in Rotary which is important. यहाँ पे Colonel साहब है. Colonel साहब, can you just rise? ये मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन 365 दिन अपनी आई हॉस्पिटल में हाजिरी देते हैं. कौन ज्यादा अच्छा रोटेरियन है? Can I ask you that? 365 days he is at his eye hospital with his wife. Can both of you stand? But he does not attend meetings. It is all about engagement now, and Rotary बदल चुकी है. You can have a satellite club. अपने club में you formulate another satellite club of 20 more members, and जब वो अच्छा हो जाए, वो satellite club is willing to look after itself, you can formulate into an individual club. Today the pandemic has changed. पूरी सोच बदल दी है, रहने की, सोचने की, खाने की, जिंदगी बिताने की धारणाएं, जिंदगी बिताने की तहजीब, जिंदगी बिताने की अपने बिजनेस करने की शैली बदल दी है. What has it done? It has made you and opened a panorama that you can open an e-club. अपने घर बैठ के you can talk to somebody in Brazil. Open an e-club. Does not stop you. It's a new toast of the season. You cannot. अच्छा, अब ये मैं ये कहना चाहूँगा कि कितने लोग हैं जिसके बच्चे यहाँ पे 20-25 साल से ऊपर के? Can you all raise your hands? कितने के बच्चे 25 साल के ऊपर के हैं या भाई बहन 25 साल के ऊपर के हैं? भाई बहन एंड बच्चे 25 साल की उम्र से ऊपर थे. प्लीज रेज योर हैंड. अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उन भाई बहनों और बच्चों में कितने रोटेरियंस हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स अगेन? आई सी मुकेश एंड मे बी 4-5 रेजिंग हैंड. तो आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा, जब आप अपने बच्चों और भाई बहनों को रोटेरियन नहीं बना सकते हो, तो किसी और की औलाद और किसी और के भाई बहन को कैसे रोटेरियन बनाओ? Go down into your house. First look at your own people. Bring them into Rotary, because then only we can expand and do better work. Now I want all the ladies to stand, please. All the ladies in this house, can you please stand? All of you. And what if I told each one of you to just walk out of this hall? If all the ladies, Veena ऐसे कर रही है, but Veena, just walk out a bit. Let's have 10 of you walk out. Just walk out. Just do an action of walking out. Suchanda says, oh my God.
10 jan, please walk out. Just walk out. Please. Just walk out of the hall, all you ladies. Just walk out. I want each one of you to walk out from this hall. All right. So just stand there. Just stand there. वापस मत आइएगा जब तक मैं कहूं नहीं. वहीं रहिएगा. अब आप सब दूसरे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी रोटरी देखना चाहते हैं आप? Is this is the hall you want? Is this is the membership type you want? Is this is the conference which you want? प्रतिम की तो धड़कन ही बंद हो गई है और वो हरे वाले कुर्ते वाले की तो जान ही निकल गई है कि कब मैं हाथ मिलाऊंगा किसी से. फ्रेंड्स, दे आर आवर बेटर हाफ. ये उन लोग हैं जो हमारे घर चलाते हैं. They are the biggest business managers in the world. They look after our house, they look after our finances, they look after our well-being, they look after the greatest asset of any Rotarian is the children. आप में से किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों को संभाल सके. They are the ones who look after each one of yours asset. और आप लोग उनको Rotarians नहीं बनाना चाहते हैं. Can you think our Rotary can, of course many of you are Rotarians, but many of you are not. Can you think of Rotary without women? And to all you women, I want to say this. All you women, all you out here, all of you, खड़क उठा लो. ए द्रौपदी खड़क उठा लो, अब न गोविंद आएंगे. ए द्रौपदियों खड़क उठा लो, अब न गोविंद आएंगे. जाल बिछाए बिसात बिछाए है शकुनी, अपने दुपट्टे को ध्वज बना लो, तब जाके दुनिया बदलेगी. So I want each one of you claim your place in Rotary. You have to claim. कोई आपको देगा नहीं. Claim your right and place in Rotary. And for every woman, अक्सर लोग ये कहते हैं कि behind every successful man there is a woman. I think ये absolutely खटियानुस सोच है, ridiculous सोच है. The new सोच is that behind every successful woman you need to carry 3 more women behind you. Are you willing to carry 3 more women? Yes. So now you please come in. Please walk into this hall and see how beautiful the environment it is. So I want everyone, we need more women member in our organization. Please pledge these women and bring them into our organization. Okay. So last part of my speech, I want every woman here, हर औरत जो इस हॉल में है, can you pledge that in this next 3 months you'll bring 1 more women member into your club? Can you do that? सिर्फ एक woman member, आपकी बहनें, आपकी सहेलियां, आपकी business partner, आपके बगल में जो रहती हैं. Is it so difficult to get 1 more women member? So all of you, I want to see all the hands raised. Every woman here, are you going to bring 1 more woman member into Rotary in just 3 months' time? Can you all raise your hands? Veena, you can raise 2 of them. From today onwards. So all those who are spouses, who are non-Rotarian women here, can you all rise? जो women हैं लेकिन Rotarian नहीं है. Can I all rise? All of you who are women but not Rotarian. पैसे नहीं मांगूंगा आपसे. पैसे नहीं मांगूंगा. All of you who are just spouses here. Can you all rise? खाली 3 ही जे, बाकी सब Rotarians हैं. Just rise. I want to honor you. Yes, please. All जो महिलाएं हैं जो Rotarians नहीं हैं इस हॉल में, can you all rise? Okay, इन सब के पतिदेव क्या यहाँ हैं? Can you also rise, please? So now, all right, Deepak is there. So now,
can we all pledge from each one of you that within the next 1 month you are going to make your spouse a Rotarian? Yes? Fantastic. Thank you. Okay, now I'll just talk a bit about retention. हम members तो बना लेते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते अपनी क्लबों में. क्यों हम रोक नहीं सकते हैं? उसके लिए एक और प्रश्न पूछूंगा before I end. When is the last time when your Rotarian friend of yours was sick? कोविड के टाइम छोड़ दीजिए, कोविड के पहले. When was the last time जब आपका एक कोई मित्र, आपके रोटरी क्लब का मित्र हॉस्पिटल में भर्ती था या घर में बीमार था, you went and visited him? Can you raise your hands? ये पूरे हॉल में 400-500 लोग हैं और सिर्फ 25 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं. अगर आप अपने दोस्त के विपदा के दिन अगर आप नहीं जाएंगे, then how do you expect him to remain in Rotary? How do you expect? आप कैसे सोच सकते हैं? And this is the biggest reason why people leave Rotary, because they feel left out. वो सोचते हैं कि हमें किसी ने प्यार ही नहीं किया, हमें किसी ने याद ही नहीं किया. हमारे क्लब में भी एक है, बहुत ही सुंदर रोटेरियन है, राजीव सबलोक, और उसकी वाइफ है सोनिया सबलोक. मारुति का डीलर है, प्रॉबली 25-30 चीज़ों का, हीरो होंडा का डीलर है. बहुत बेहतरीन रोटेरियन है. जब भी हम लोग जाते हैं तो पैसे का चेक तो लिख देता है, लेकिन कभी रोटरी मीटिंग अटेंड नहीं करता. तो एक दिन संदीप, मैं, संजय, वी वर ऑल सिटिंग, राजन, वी वर ऑल सिटिंग इन द रूम आफ्टर अ रोटरी मीटिंग. 10 बजे रोटरी मीटिंग ख़त्म हुई और हम लोगों ने सोचा कि राजीव और सोनिया क्यों नहीं आते हमारे क्लब मीटिंग में. दे आर वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड. सो वी गॉट इनटू द कार एट 10 o'clock. रात को 10 बजे मीटिंग के बाद हम गाड़ी में 5-6 लोग बैठे और उसके घर पहुंच गए. जब वहां पहुंचे तो राजीव सोनिया घंटी बजाई, दोनों ने दरवाज़ा खोला. दे वर बीमिंग. दे सेड, ओ संदीप यू हैव कम, ओ राजन यू कम, संजय यू कम, कमल कम कम कम. सोनिया ने तुरंत हमें अंदर ले गया. यू नो, नेचुरली संदीप जहाँ जाता है ड्रिंक्स साथ में ही होते हैं. सो वी गॉट द विस्की, वी गॉट द टी, वी गॉट द स्नैक्स. खाना भी बना के दे दिया एंड हमें बहुत खुश करके भेज दिया. सो वी वेंट एंड टोल्ड टू हिम, राजीव सोनिया यू डोंट मिस अस बट वी मिस यू, प्लीज़ कम टू द रोटरी मीटिंग. और राजीव सोनिया ने कहा कि यस विल कम नेक्स्ट मीटिंग. नेक्स्ट हमारी मीटिंग ट्यूसडे को होती है, संदीप की होटल में होती है. नेक्स्ट ट्यूसडे 8 बजे जब मीटिंग हुई, प्रिडिक्टेबली राजीव सोनिया मीटिंग में नहीं आए. प्रिडिक्टेबली हम लोग फिर रात को 10 बजे 5 लोग गाड़ी में बैठ के फिर वही लोग गए राजीव सोनिया के घर में. घंटी बजाई, सोनिया ने फ़ोन, दरवाज़ा खोला और हमारी तरफ देख के इस बार क्या बोला, ओ तुम लोग आए हो, ओह तुम लोग आए हो. एंड बोली आइए. फिर जाके हम लोग बैठे तो उस दिन सिर्फ हमें चाय मिली, विस्की ख़त्म हो गई, नाश्ता ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया. एंड देन अगेन बड़े बड़े विनम्रता से हमने कहा राजीव सोनिया प्लीज़ कम टू आवर मीटिंग. एंड प्रिडिक्टेबली नेक्स्ट ट्यूसडे दे स्टिल डिडंट कम फॉर द मीटिंग. तीसरे ट्यूसडे हम लोग फिर 4-5 जन चले गए और फिर घंटी बजाई 10 बजे. सोनिया ने फिर दरवाज़ा खोला और जैसे हम लोग की तरफ देखा कि राजीव योर फ्रेंड्स हैव कम, और वो चली गई अंदर में. और अंदर से आवाज़ देती है, ओ जी ज़रा यहाँ आइए तो अंदर में. जैसे राजीव अंदर बेडरूम में गया तो यू नो व्हाट मस्ट हैव हैपेंड आफ्टर दैट. महाभारत से कम युद्ध नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसने राजीव से कहा ये कैसे लोग हैं तुम्हारे दोस्त, रात को 10 बजे किसी के घर आने का समय है. एंड प्रिडिक्टेबली नेक्स्ट ट्यूसडे 7:45 बजे राजीव वॉज अटेंडिंग द मीटिंग, सिटिंग देयर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अटेंड द मीटिंग. फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट लव. मैं हमेशा कहता हूँ प्यार मोहब्बत और इश्क की कहानी है. प्यार जताइएगा तो इश्क पनपेगा, इश्क पनपेगा तो सर्विस होगी और ज़िंदगी खुशनुमा होगी. सो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड ऑल यू प्रेसिडेंट्स, ऑल यू सीनियर रोटेरियंस, हर मेंबर इन 5 उंगलियों की तरह होता है. अलग शेप, साइजेस, कलर, कास्ट, क्रीड, नॉलेज, एजुकेशन, सब अलग अलग होते हैं. अकेला अंगूठा कुछ नहीं कर सकता, अकेली छोटी उंगली कुछ नहीं कर सकती. हर मेंबर इस 5 उंगलियों की तरह है. बट व्हेन यू इन्वॉल्व ऑल द 5 मेंबर्स, then it becomes a powerful mutti, and then your club will run like nobody's club. So involve your Rotarians, friends, then only the world will become a better place. And I want, and for this, Shekhar Mehta ने एक बहुत ही छोटा सा
has asked each one of you. He said, how will we raise our membership? And he says, membership is not, it's the only thing which is by, you can do it individually. हम हर काम as a team करते हैं, हम हर काम as a group करते हैं. लेकिन membership is the only thing which you do individually. क्योंकि you can only individually invite a member. So I want each one of you, can we live up to Shekhar Mehta's dream of raising the membership to 1.3 million by 30th June by asking each one of you, each one. So let us do this and let us bless our President Rotary International, Shekhar, the Indian, the fourth Indian, and let us live his dream, walk his dream, talk his dream by each one of us pledging to bring a member into Rotary. So can we have all the presidents to stand? All the presidents, Pratim ke presidents, jitne bhi yahan hain, can you all please stand? सिर्फ 6 हैं, 7, 8, बाकी presidents 9, 10. All the presidents of Pratim, can we get a commitment? Can I get a commitment that in the next 3 months, each of you club members will get 10 members into your club? 3 महीने बाकी हैं. 3 महीने. Can you all raise your hands? Okay, fantastic. Thank you. And to end with, let me just say that, friends, just to end with, I just want each one of you, and thank you each one of you, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ for what you do for Rotary, और इसीलिए कहता हूँ कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है. ज़िंदगी बदलने के लिए या रोटरी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है. और जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान सम करने के लिए समझना भी पड़ता है. जिंदगी या रोटरी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना भी पड़ता है. सोना बनो लो और लोहा बनो, चाहे तो सोना बनो और या सोने में पूरी जिंदगी गुजार दो. या तो सोना बनो या तो सोने में पूरी जिंदगी गुजार दो. अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ता है. कुछ अगर अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ता है. भीड़ साहस तो देती है, भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है. भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है. न मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो, ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी जब समंदर में जाती है तो कभी मुड़ के ये नहीं पूछती है, आज तक रास्ते में से किसी ने नहीं पूछा समंदर कितना दूर है. निकी कौशल आज तक नहीं पूछती है कि समंदर कितना दूर है. तो गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू. डू इट एंड एंजॉय रोटरी and have a great time. And before I end, let me pay my respect to the President Representative Madhav and Sujata. Both of them are extremely dear to me. Can you all, both of you, rise please? Madhav and Sujata, बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम और सोनल होंगे. तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हें पाकर सबसे मूल्यवान हम और सोनल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. Amazing, Kamal. Always a pleasure. Kamal ko sunna is always a pleasure. I would now request our RI rep, Madhav and Sujata, to please give a token of gratitude to Kamal Sangvi.
Thank you, Madhav Sujata. Thank you, Kamal Sonal, for being here, and thank you, Pratim and Suchanda. हम सब यहाँ पे Rotarians हैं, correct? Rotary Fellowship के लिए आते हैं. And we have seen Rotary Fellowship at its best जब हम लोग conferences में आते हैं. We meet old friends, we make new friends. But जब तक आप Rotary International Convention में नहीं जाते ना, you don't see the extent of Rotary Fellowship. एक बार आप convention में चले गए, आपको हर साल मन करेगा आप जाएं, attend करें to meet your old friends from different parts of the world. So now to shed light on to Houston, I invite past Governor Sandeep Narang. Thank you, Anu. Can we have the convention video, please? We are excited to invite you to 2022 Rotary International Convention, Houston, Texas. Where there are no limits to what can be discovered. Our horizons are changing, but we remain resilient. Because it's in our nature to break down barriers. To explore the vast world of ideas, culture, and experiences. The very things that give us new meaning to life. So what better time than now to take action? And push the boundaries of what's possible. To join forces and do something that revitalizes the spirit. Form connections that broaden our worldview. Share our passion for service with other leaders. And become inspired to do great things along the way. Let's take on new horizons and see what's possible. Because our potential has no limits. Discover new horizons at the 2022 Rotary International Convention in Houston, Texas. Come, let's discover new horizons at the 2022 Rotary International Convention, Houston, Texas. Can we run the presentation? Thank you, friends. The Houston Convention is going to be historic for all of us from India because the world president is from our country. So this is a time to be there to cheer him up. And I'm happy to also announce that one of our members of the Houston Convention Committee is your own past director, Kamal Sangvi. So it's a great moment to be in Houston. Unfortunately, we have today visa issues for the with the American embassy because it's not fully open as yet. But we hope it will open soon. They'll fast track it. But I also know that a lot of you already have a 10 years US visa. So do not miss the Houston Convention. It's a great place to meet all your Global Grant partners. It's a great place to network. It's a great place to get new ideas, what's happening in Rotary around the globe. And like anyone who's been to a district conference really never leaves Rotary, anyone who goes to the International Convention will really learn about the internationality of Rotary. With this little message, I extend on behalf of Shekhar and Rashi and on behalf of your governor, Pratim and Suchanda, a warm invitation to plan to be at the Houston Convention. And if you have any questions, you can ask us during lunch, or ask Kamal or ask me during lunch, and I'll be happy to guide you.
The registration is $495 for the US convention. Thank you. Thank you, Sandeep. You need to be here. Sandeep will present the district resolutions now. Thank you, friends. I have some good news and bad news. The bad news is, or it may be the good news, that we really do not have any resolution from the clubs of our district for this conference. And the good part is that we are now going to begin our customary resolutions. And if you all agree with me, keep on saying aye. If you disagree, say nay. Okay? So this district conference of 2021-22, Dil Se, resolves on April 3rd, 2022 at a conference in Puri. It unanimously resolves its gratitude and deep appreciation to RI President Shekhar Mehta and his gracious wife Rashi to have sent PDG Madhav Chandran and his charming wife Sujata as their personal representative to our district conference. I, PDG Madhav's active participation in all the activities of the conference, his valued guidance and fellowship is deeply appreciated by all the conference delegates. He was ably aided by the elegant, ever-smiling spouse, Sujata. We also would like to put on record that you both are great dancers. A louder one on this. Our regard and respect for our keynote speakers who left us inspired and motivated. First from the Rotary world, immediate past Rotary International Director Kamal Sangvi, PDG Deepak Shikharpur, PDG Dr. Las Kolatkar, and PDG Sanjay Khemka. Louder. Appreciation for our celebrity speakers, Mr. Mrityunjay Singh, IPS, Mr. GSS Krishna from TCS, Dr. Lakshmikant Kasat, the Honorable Governor of Orissa, Professor Ganeshi Lal, and of course, Mrs. Nikki Kaur, Ajay Raj, and Mr. Balwinder Saluja. Thank you. We'd like to place on record our appreciation to all our entertainers from within District 3250 and all those who came from around the country. There are too many of them to name on this sheet here. Our deep appreciation for all our past, current and incoming RI officers from other districts as well as our own district for their participation in the conference program. We'd like to place on record our thanks and appreciation of all club officers, Rotarians, spouses, partners, Rotarylets, Rotractors, Intractors, and Inner Wheel members for their presence and participation in the success of the conference. Thank you. Our thanks and gratitude to all our donors, advertisers and sponsors to the conference. Our thanks and appreciation to the management of Hotel Golden Palace and all other official hotels. And now, our appreciation for Conference Chair Deepak Dokania and Dipali and Co-Chair Anjani Nidhi, to all presidents and members of the 7 host clubs of Jamshedpur, Rotary Club of Jamshedpur, Jamshedpur West, Jamshedpur East, Jamshedpur Steel City, Jamshedpur Midtown, Jamshedpur Dalma, and Jamshedpur Femina
for their all-round involvement and for providing a grand conference. A louder one. And a big one for Deepak and Dipali. Last but not the least, we place our deepest appreciation for District Governor Pratim. Where is Pratim? Untiring efforts to make it a grand success. Suchanda, you can rise and take it on behalf. And finally, the conference would like to place on record our appreciation for Governor-elect Sanjeev Thakur and Poonam for their active involvement and wishes them the very best as they embark on their training programs of their team for next year. Give them a big eye. Thank you so much. You've been a great audience. Thank you, Sandeep. Friends, we are again there for the lucky winner. Are you ready for the lucky draw? Roll the lucky draw, please. Can we have the lucky later? All right. We'll have after 2 minutes, I guess. So till then, Anjani. Yeah, I see you all. We are ready with the lucky draw. Before that, we have the lucky draw first. Rotarian Archana Jain from Chanakya. Yes, we have her there. Can I have Sujata, please, to come and do the honors? Sujata, we'd like you to be here. We can have the another lucky draw, please. ये बोगी के देना है, ये बोगी के देना यहाँ रेडी है, देखो ये सेटिंग था। प्रतिम, ये अलाउड है कि नहीं? लकी ड्रॉ, not allowed. Next lucky draw. झूमा से मेरे को मार पड़ेगी, सॉरी झूमा, सबका डिसीजन था, मेरा नहीं. Rotarian Pradeep Kumar Srivastava from Narkatiyaganj. Yes, we have. Do we have? Yes, we have. We have Rotarian Pradeep Kumar Srivastava. पता है जब lucky draws खाली नहीं जाते तो बहुत खुशी होती है that people are there in the hall.
you, Sujata. फ्रेंड्स कहते हैं कि हो खरीदार तो तैयार हूं बिकने के लिए, हो खरीदार तो तैयार हूं बिकने के लिए, दो बोल मोहब्बत के हैं कीमत मेरी. So that's the price. Friends, the society we live in, वहाँ बहुत सारे शख्स ऐसे हैं जिनका कद बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो बोलते कम हैं, दिखते कम हैं. कल हमने सुना जो दिखता है वो बिकता है. The next award, the next segment is about somebody कि वो अगर झुककर कभी मिलता होगा तो उसका कद तुमसे बहुत ऊंचा होगा. And to present that kind of personality to all of you, I would like to invite DG Pratim Banerjee, and let us hear from DG Pratim what he has to say and whom he has to recognize. DG Pratim. फिर से नमस्कार. जैसे कि अंजनी आवर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी ने बताया आपको, हम आपके सामने में एक ऐसे शख्स को पेश करने जा रहे हैं. आप उनको सारे जानते हैं. यू ऑल इंडिविजुअली रेस्पेक्ट हिम एज अ रोटेरियन as much as if not for various reasons. ऐसे शख्स बहुत कम ही होते हैं. And very fortunately, just the way we respect and regard him as an individual, him as a Rotarian, him as a human being, हमारे Rotary World, हमारी Rotary International ने भी उनको recognition has extended a recognition of service above self. ये service above self हर साल ऐसे, as you know, we have 1.2 million plus या 12 लाख से ज़्यादा हमारे वर्ल्ड की मेंबर्स हैं. हर साल 150 ऐसे लोगों को चुना जाता है कि जो रोटरी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और हम से भी बहुत कुछ एक दो कद इतनी ऊंची है कि साल में 150 ऐसे रोटेरियंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन 12 लाखों में हर साल 150 की चुना जाता है. इस बार 21-22 इन 150 में हमारे बीच में एक है, शायद आपको मैंने बताया भी हूँ, हु इज डॉक्टर आर भरत ऑफ रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर. ये बहुत, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम प्राइड एंड ऑनर फॉर अस टू हैव a person amongst us to be selected. And for the fact that थोड़ी से दोहरा दो, he is from Rotary Club of Jamshedpur. 1991 में उन्होंने Rotary Club join किया था. He was then, of course, professionally वो टाटा मेन हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे. And सबसे बड़ी बात है, since 91 till date he has attended all the club and public functions. एक भी नहीं, उन्होंने 100% अटेंडेंस है उनकी. शायद ही हमारे में कोई ऐसा हो जो इसका कदर है. यार क्या नहीं किया उन्होंने अपनी सर्जिकल, अपनी प्रोफेशन की. ही हैज डन एंडलेस नंबर ऑफ क्लेफ्ट लिफ्ट ऑपरेशंस. आप तो जानते हैं वो क्लेफ्ट लिफ्ट की ऑपरेशन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू अ पर्सन, और वो अपनी वो एक कमी कैसे वो पूरा कर देते हैं. He has done an extremely number of projects and processes. He had been his club. सबसे बड़ी बात है, उन्होंने GSC टीम की लीडर भी थे ब्राज़ील की. ब्राज़ील वाज इन नॉर्थ कैरोलिना. नॉर्थ कैरोलिना में वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को लीड किए थे.
एज ए टीम लीडर। अब सबसे बड़ी खासियत है कि पांचों टीम के मेंबर्स जो गए थे सारे लेडीज थे, तो ये भी अनोखा एक जो स्टैटिस्टिक्स है उनसे ये दिस इज अ पार्ट ऑफ हिम। फिर तो आपको याद ही होगा वे ही वाज आवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एंड व्हाट अ फैंटास्टिक ईयर वी हैड। उनकी कॉन्फ्रेंस अगर याद करें हमारे जमशेदपुर में हुआ था। अभी भी बहुत लोग, जब मैं अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ऑफ कोर्स दैट टाइम आई वाज he had me as the district secretary, not for the full time, for employed time. हमको सबको यही बात बताते हैं, अच्छा प्रतिम आपके कॉन्फ्रेंस तो डॉक्टर भारत जैसा ही होगा ना। सोचिए दैट वाज द बेंचमार्क एवरीबडी हैज क्रिएटेड। अब इतनी तक हम पहुंच पाए कि नहीं, ये आप अब बाद में हमके बताइएगा। तो आई थिंक इट इज द मोस्ट, आई एम मोस्ट प्रिविलेज्ड एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द फैक्ट that हमारे ईयर में 21-22 में Dr. Bharat has been selected with the highest award in Rotary, Service Above Self. So please give him a big hand and I request Dr. Bharat to please come on stage. And of course, Madam जी, आप भी उनकी इतनी साथ दिए हैं। सर बादल जी, अगर आप भी अगर ऊपर आके उनको सम्मानित करें। सुजाता मैम आप भी अगर थोड़ी से आए, अगर उनको सम्मानित करें, इट विल बी सो ऑनरेबल फॉर अस। About me, my achievements, Governor Pratim just told. Whatever extent I deserve this award, but for Governor Pratim's recommendation, probably I wouldn't have got. Thank you very much, Pratim. Congratulations, Doc. I invite Conference Chair Deepak to make some announcements. आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि अमेरिकन ऑक्शन क्या होता है? जिसको नहीं पता हो हाथ उठाइए, मैं बताता हूँ अमेरिकन ऑक्शन क्या होता है। ओके, हमारे पास एक सामान है जिसका जो रियल वैल्यू है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप लोग उस पर बिडिंग करते हैं। जैसे सपोज इसकी कीमत अगर 5,000 है, मैं बोलूँगा 5,000 से शुरू हो रहा है। सपोज मुकेश तनेजा बोलते हैं 5,500, तो उनको मेरे को 500 रुपये देने हैं, 500 रुपीज़। डॉक्टर अमित मुखर्जी बोलते हैं 6,000, तो ही हैज़ टू गिव द डिफरेंस अमाउंट 500 अगेन टू मी। ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा। हमने घंटी लगा के रखी है, वो घंटी जब बजेगी उस समय सपोज रजनीश तलवार बोलता है 12,000 था और वो बोलता है 12,100, उसको सिर्फ 100 रुपये देना है और वो चीज़ उसकी हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट हो तो बोलिए, हाथ उठाइए अगर समझ में आ गया तो। शुरू करें, फिर से समझाएं। मेरे पास ये ब्लैक लेबल की विस्की की बोतल है, इसकी एक्चुअल कीमत है 5,000।
अब मैं 5,000 से अपनी बिडिंग शुरू करूंगा। सपोज संदीप नारंग बोलते हैं 5,100, तो इनको मुझे 100 रुपीज़ देने हैं और वो बिडिंग नेक्स्ट लेवल में जाते चली जाएगी। उसके बाद सपोज किसी सज्जन ने कहा 6,000, उस सज्जन को मुझे 900 रुपये देने हैं। 6,000 माइनस 5,100, वो 900 रुपये मैं रख लूँगा और बिडिंग चलते जाएगी। ये इसी तरह चलते रहेगा, लोग बिडिंग करते रहेंगे। फाइनली मैंने जो घड़ी सेट की, अलार्म बजेगा, उस समय जिसकी बोली आई वो बॉटल उसकी हो गई। तो सिर्फ डिफरेंस अमाउंट देना है। अगर ये 25,000 में बॉटल जाती है तो आपको 25,000 नहीं देना है। उस समय जो आपके पहले वाली बिडिंग थी सपोज 24,500 की, तो आपको खाली डिफरेंस अमाउंट देना है और ये बॉटल आपकी। इज दैट क्लियर नाउ? शुरू करें? ओके। मेरे तुरंत इस प्रोग्राम के बाद चारों डीजी कैंडिडेट्स को अपने स्पीचेस देने हैं। आप लोग प्लीज़ रेडी रहिएगा। और इस बॉटल से इसके सेल के बाद जो भी प्रोसीड्स हमको आएंगे, सपोज ये बॉटल 25,000 में जाती है, जितना भी पैसा आएगा हम चंडीगढ़ रिहैबिलिटेशन सेंटर को देंगे। ये हमने डिसाइड किया है। एक बार जोरदार तालियां जो हैं उसके लिए। और उसके बाद हम अपनी एक खेल शुरू करते हैं। 10 मिनट का, 12 मिनट का टाइमर मुझे मालूम नहीं है। कमल मकाटी, कैन यू हेल्प मी? All the 4 candidates, can you please come here? Pratim is calling you. All the 4 DG candidates, aspirants, can you please come here? कमल, start करें? Okay, हमने एक अलार्म शुरू कर दिया है। इसका एक्चुअल प्राइस है 5,000। नेक्स्ट बिड किसका है इसमें बताइए? हाथ उठा के कोई कॉर्डलेस माइक लेके उनके पास जाइए। राजीव और राजीव तलवार को आपको कैश देने हैं और कॉर्डलेस माइक लेके जाइए। कॉर्डलेस माइक साउंड वाले कहाँ हैं? उनको दो, जो बोलेगा नीचे जाओ। ओके, 5,200। आपका नाम क्या था? प्रकाश बंसल। विकास बंसल। विकास बंसल, ओके। 5,200 next. Yeah, 5,200. Next one. Hurry up. Hurry up, hurry up. Vipin, Rajendra, where are you? I need Rajendra, somebody. your bid. 5,700 now. Okay, Navalji, 5,700. Next. Hurry up, hurry up. किसी भी मोमेंट घड़ी चली जाएगी और जब घड़ी बज गई बॉटल आपकी। 1 मिनट पूरा हो चुका है। पुजारा जी बताइए। 6,200. नाम भी बताइए, नाम भी। Your name, please? Kumar Pujara. Mr. Kumar Pujara, 6,200. Okay, 6,200. 6,201. Suchanda. Suchanda Banerjee. Not Suchanda. Okay. I thought the tables have turned. Okay, Amit Agarwal of Patna, Amit Agarwal, Ranchi. 6,700. 6,700. Hurry up. Time is ticking. बहुत अच्छे कॉज के लिए पैसा जा रहा है। Yes. सभी से रिक्वेस्ट है। Yeah. Who's giving? निशांत जी, आपका बिड बोलिए। कहाँ है निशांत? हाथ हिलाने से नहीं होगा, आपका बिड। माइक चाहिए। आगे आइए, आगे आइए, आप निशांत। आगे आइए, जल्दी आइए। हरी अप। प्रमोद दुबे जी, आपका बिड चाहिए। आइए, सामने आइए, सामने आइए ना। 1,000 rupees. Anjani Nidhi. वेरी गुड। प्रमोद दुबे। 500. वदेरा साहब आ गए हैं, वदेरा साहब। Vadera The sahab, 2,000 price of rupees. the bottle is 5,000. Mr. It's a black Vadera, label. 2,000 rupees. Okay, Mr. Vadera, 2,000. What is it now, Rajiv? Yes, sir. Rajiv, what is the bidding I'll amount? I'll tell you. Just hold on. Keep a track of it. Hurry up. What is the bidding amount, Rajiv? Hurry up. Any moment घड़ी चली जाएगी, जल्दी करिए। Any moment. Mr. Bipin Chachan, you are wanted near the stage.
आइए आइए राजीव हरिया प्लीज टेल मी द बिडिंग अमाउंट यार 8,700 plus 5,000, 13,000. 13,700 बागा आप 13,700 13,700. Next. संदीप नारंग 14,200. 14,200 संदीप नारंग कैलाश चौधरी साहब कैलाश चौधरी जी बहुत ही अच्छे कॉज में जा रहा है आपने खुद प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखा था पुजारा जी वंस मोर आइए सर आइए ये है 500. 14,700. नाम बताते चलो 15,300. 200. राजीव नाम भी बताना है नाम भी 700. अनिल शर्मा 3,700. नहीं 50 का मत दीजिए. महेश दारुका जी आइए 15,900. सारण के अध्यक्ष साहब आइए 16,400. 16,400 हड़प जल्दी हरी अप 16,900. टाइम इज टिकिंग एनी मोमेंट घंटी बज जाएगी एनी मोमेंट हरी अप 17,400. Rotary Saran. सर्विस above self award winner Dr. Bharat sir your bid please whatever you like Srivastav 17,900. Dr. Bharat whatever you want Lokesh Sahu you will do an e-transfer 19,400. पेटीएम नहीं चलेगा कैश चाहिए On behalf of Rotarian Rajendra Modi from Kodarma. Dr. Bharat 20,400. एक्सीलेंट कीप इट अप 20,400 वीना मुंद्रा जी कहाँ हैं 22,400. Your name, sir? वीना जी Rakesh Gupta. वीना जी के बगल में कुसुम ठाकुर जी भी हैं महिलाएं बहुत कम आ रही हैं सिर्फ पुरुष आगे आ रहे हैं हरी अप वीना जी कुसुम ठाकुर जी अरे sorry. Mr. Girish Agarwal 23,400. 23,400 गिरीश अग्रवाल जल्दी करिएगा जल्दी 23,400. वीना मुंद्रा जी विपिन दो कहाँ भाग रहे हो? अंजू गंडोत्रा वीना मुंद्रा कुसुम ठाकुर वुमेन पावर हरी अप इट सीम्स द बॉटल इज गोइंग टू गो टू अ वुमेन एनी मोमेंट घंटी बजने वाली है जल्दी 23,900. बाद में मत बोलिएगा मेरा पैसा चला गया हरी अप एनी मोर लेडीज कमिंग 400. आइए संजीव ठाकुर जी आप कैसे आप बच गए आइए 24,900. संजीव ठाकुर जी आइए हमारे डीजी इलेक्ट साहब 24,900. 25. संजीव जी कैसे बच गए 26,300. केसर सिंह एजी जोन. और किसको हम लोगों ने छोड़ दिया है सरोज कुमार क्लब हजारीबाग जल्दी बोलिए भाई जल्दी 800. 2,000 संजीव ठाकुर 28,800. ओके मोना बहादुर जी हैं मोना बहादुर यस मोना 28,900. आइए राकेश चाचन जी आइए संगीता शर्मा जी आइए क्लब जमशेदपुर आने में कंजूसी मत करिए खुशबू बंसल जितने प्रोसीड 29,400. जितने प्रोसीड से बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं हरी अप सारण अजय गुप्ता सिर्फ 2 मिनट बचे हैं मैं बता दिया आपको अंदर की बात 2 मिनट बचे हैं 30,400. जल्दी करिएगा सिर्फ 2 मिनट बचे हैं 400. मिथिलेश झा जी बैठे हैं वहां पर जी आइए झा जी आइए सर आइए आइए 30,900. सुधीर कुमार सिन्हा 31,400. आइए मिथिलेश झा जी आइए क्या शानदार एक्टिंग है आपकी 31,600. नाम भी बताते चलो राजीव नाम भी अलकनंदा बख्शी रोटरी वेस्ट जमशेदपुर अलोका बख्शी के नाम में भी बिड स्टैंड करता है 2,000 more 33,600. 36,300 हरी अप 33,300 33,600. सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड बचे हैं हरी अप सोनल आई कैन सी सोनल ऑल्सो 600 I can see Sonal. From your friends. Okay. It's from the 34,100. Charminar. So you have put a shut on your mouth, huh? 35,100. Archana Jain, 35,600. Chanakya. Archana Jain. विनीता अग्रवाल Okay, Dipali Dokania. How much? दीपाली दुखानिया 500. Very good. 500 36,600.
Mithresh Jha, Rotary Jamshedpur West. 36. सर जल्दी करिए, मैं बोल रहा हूँ। 100. साहू जी को देख रहा हूँ, साहू जी आइए। Few seconds Hitesh left. Bhagat. Quick, few seconds left. 38, 100. बाद में मत बोलिएगा कि मेरा पैसा चला गया, बॉटल नहीं मिला। मैं 100. बता दे रहा हूँ, हरी अप। Rotary Femina. Vivek 4400. Singhania, 200. 4600. Rotarian Yogesh, 500 राजेश from कुमार, Nalanda. जमशेदपुर वेस्ट प्रेसिडेंट, आइए आइए सर, बड़ी खुशी हुई, आइए Maladar, आइए, यहाँ के बोलिए, यहाँ के बोलिए, 500. आइए आइए 41,700. आइए। Sorry, 46. Mr. Rajendra Sharma, 500. Okay. Vivek Singh, 500. And what is the total amount now? 46,100. 46,600. नाम बताइए, नाम Sir. नाम बताइए, बिकॉज बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। Rajesh. कमल 46,700 था, right? 36. 46,700. 47, 200 now. 48,200. 48,200. President Rajesh Rajesh. from Rotary West, Jamshedpur. Rotarian Yogesh from Nalanda, 500. दबा देना, दबा देना। Kumar Pujara from 49. जल्दी करिए, 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी करिए। 49. 1 minute. 49. 1 sec. नाम बोलो राजीव, कंफ्यूजन हो जाएगा। 700. जल्दी नाम बोलो, नाम बोलो जल्दी, पैसा बोलो। अभी थोड़ा सा गैप रखिए आप लोग। हाँ गैप रखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। 300. Jamshedpur. हरी अप, जल्दी करिए, जल्दी नाम भी बताते चलिए। Yogesh Nalanda, 500. आप लीजिएगा लास्ट। स्टॉप Now, it is the winner is. Winner is Pasam Adesra. मुझे मालूम नहीं था। ये अफ्रीका है। देखिए एकदम 10 मिनट में किया, कहीं भी कोई हमने पसम पक्षपात नहीं आदेशा। की है। Who's the winner? Pasam Adesra. Okay, Pasam Adesra, Rotarian Pasam Adesra from the Rotary Club of Jamshedpur Femina. A big round of applause for him. The total time taken was 10 minutes. We had set the alarm for 10 minutes. Thank you. We have been able to raise around 52,000, which shall all be given to the Chandigarh Rehabilitation Center. A big round of applause. Ma'am, this is what we can do for you. Thank you very much. Pasam ji को bottle देना है. I'll invite Sandeep Narang, PDG Sandeep Narang. ये है रोटरी का जादू फ्रेंड्स, या ब्लैक लेबल का जादू, whatever. I request our DG Pratim to conduct the next show. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। अमित भैया से थोड़ा थोड़ा गाने का शौक मुझे भी चढ़ रहा है। डॉक्टर अमित मुखर्जी, डीजी प्रतिम, Good afternoon again.
जैसे कि आप जानते हैं, द इलेक्शन प्रोसेस हैज स्टार्टेड. हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2024-25 का प्रोसेस इज ऑन. What we are wanting is, ऐसा तो यूं सब अपने नॉमिनेशंस जो डालेंगे वही परंपरा जैसे हमारे पिछले 4-5 साल से हो रहा है. इट विल बी ऑन ई वोटिंग. प्रेसिडेंट्स के पास लिंक्स आएंगे, प्रेसिडेंट अपने क्लब की मेंबर्स के सहमति से वोटिंग करेंगे अपनी कैंडिडेट से. तो हम चाह रहे थे कि इसकी थोड़ी सी झलक, इसकी थोड़ी सी फ्लेवर हमारे इस कॉन्फ्रेंस में भी मिल जाए. हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि आप कैंडिडेट से साक्षात उन क्या हैं, कैसे हैं, एक दो सवाल करके हम उनको जानना चाहते हैं. तो उसमें आपको डिसीजन लेने में सुविधा होगी. ये परंपरा पहले हुआ करता था जब हम फिजिकली वोटिंग करते थे, बट लोगों की चाहत अभी भी है, भले ही वोटिंग हो, 4 जो 5 10 जो भी कैंडिडेट्स हैं वो स्टेज पे आए और कुछ बोले और लोग उनको सुने और अपने उनको परखें कि वो है क्या चीज़. तो इस साल अभी तक हमारे पास, हमने सारे को कहा था कि वो अपने 4 कैंडिडेट्स हैं हमारे. मैं उन चारों कैंडिडेट्स को यहाँ इस स्टेज पे, मंच पे आना रिक्वेस्ट करूँगा. के वर्मा जी, रोटेरियन के वर्मा फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ पटना. मुकेश तनेजा from Rotary Club of Ranchi. Dr. Ajay Kumar from Rotary Club of Bihar Sharif. And Rotarian Bipin Chachan from Rotary Club of Patliputra. आइए इधर आ जाइए. विपिन, फुर्ती से. ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग. आप कैसे चल के आ रहे हैं, कैसे दौड़ के उठ रहे हैं, क्या है, कितनी फुर्ती है, क्यों? आप तो हमको परख के उसी में डिसीजन लिए थे हमको गवर्नर बनाने के लिए. देखिए देखिए कितनी मित्रता है. देख रहे हैं, मन में एक दूसरे को ठूसा ठूसी होना है, बस दिखा रहे कितनी बढ़िया बात है. नहीं, यही सच्चाई है, यही उचित है. दिस इज द राइट वे टू डू इट. तो ऐसा करते हैं. व्हाट वी हैव डन इज, हमने 10 सवाल, हम लोग ने 10 सवाल बनाए हैं, उनको एक लिफाफे पे हम डालने के बाद इनको अभी 15 मिनट पहले वो 2 सवाल हमने उनको दे दिया है ताकि वो थोड़ा सा अपना तैयार हो जाए. तो सबों के पास अलग अलग सवाल होगा और उसमें वो 3 मिनट बोलेंगे. पहली सवाल चारों बोलेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में दूसरे सवाल का उसका आंसर देंगे. तो इसमें आप भी सुनिए और आनंद लीजिए. अपने कैंडिडेट्स की जो भी हो परीक्षा ले लीजिए या जैसे भी हो, मगर ऐसा गुमसुम आप लोग ना बैठे. थोड़ी सी इनकी तालियां लगवा दें. ये जो भी हो, इन्हीं में हमारे आने वाले लीडर्स हैं. प्लीज़, मैं यही हर वक्त बोलता हूँ कि भले इस बार की नहीं तो अगली बार नहीं तो तब, यही हमारे चारों में हम लोग को फ्यूचर लीडर्स दिख रहे हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. तो आप लोग कैसा करेंगे अल्फाबेटिकली? तो आ जाइए. ए इधर आ जाए, बी आर के एम. तो पहले हम चाहेंगे कि इस अल्फाबेटिकली अगर ले, डॉक्टर अजय कुमार, रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ. आपकी पहली सवाल कौन सा है? नंबर बताइएगा. कौन सा बोलेंगे? नंबर 5 क्वेश्चन, हाउ विल यू बैलेंस. अरे वाह, सही क्वेश्चन. हाउ, कौन मेरे साथ हंसा? वह मामला समझ में आ गया. 5वां क्वेश्चन इस लिस्ट के उनके ऊपर गया, वो 3 मिनट अभी इस पे बोलेंगे. हाउ विल यू बैलेंस योर टाइम विथ योर फैमिली एंड योर DG रोल? How will you balance your time with your family
and your DG role. ए भाई कोई टाइमिंग को लेके थोड़ा सा मदद कर दे. कमल आप तो कर ही रहे थे, थोड़े से इसको लेके भी आगे बढ़ाइए. अवार्ड्स फंक्शन में हम आपको एक तो देंगे रिकॉग्निशन. 3 minutes. हाँ मैंने 2.5 में एक तो उनको इंडिकेट कर दीजिएगा, 3 में दूसरे इंडिकेट कर दीजिएगा, मगर बोलते रहना तो बोले ठीक है. कोई ऐसा सर थोड़ा सा सर टेंशन मत लीजिए सर, ये भी टेंशन में आप भी टेंशन में, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आनंद में रहिए. चारों लोग हैं, अब हम लोगों की लीडरशिप को लेके आगे बढ़ाना है, हम लोग को इनके साथ चलना है. एक दिन शायद आने के साल में इन्हीं के लीडरशिप में हम कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. खूब आनंद में रहिए. एक जोरदार ताली लगवा दीजिए सर. थैंक यू. तो चलिए डॉक्टर अजय, ये सवाल आप समझ गए ना क्या सवाल है. अपनी टाइम अपनी फैमिली की ओर और डीजी की टाइम को बैलेंस कैसे करेंगे. 3 minutes स्टार्ट फ्रॉम नाउ. बोलिए. Hello. Good afternoon, everybody. Myself, Dr. Ajay. सवाल थोड़ी सी टेढ़ी है. How will you manage your life, family life basically? और आप डीजी अगर बन गए तो आप कैसे मैनेज करो बैलेंस. तो इसमें अभी क्या है कि वी हैव लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम टेक्नोलॉजी. तो हमारी जो जितने भी अभी हम लोग हमारा प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ चल रहा है पिछले 2 साल से. लास्ट ईयर राजन सर ने मुझे काम दिया था, इस साल हमारे प्रतिम सर ने भी काम दिया. तो हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट. हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं अभी भी. और वेर आई गेट व्हाट्सएप की जो ज़माना है, इसके वजह से हम लोग सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. तो कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जो है कहीं से भी एनी टाइम कोई भी फ़ोन करते हैं, हम लोग उनको उठाते हैं. अगर उठा नहीं पाते तो व्हाट्सएप के माध्यम से फिर उनको हम लोग बात करते हैं. जो भी मैसेज देना होता है कोई प्रोजेक्ट के बारे में, वी डू इट विथ ऑल टाइम. और हमारी फैमिली, तो फैमिली इज़ द प्रायोरिटी इन रोटरी. तो फैमिली छोड़ करके उसके बाद ही कुछ हो सकता है. फैमिली एंड देन योर प्रोफेशन एंड देन कम्स द रोटरी. तो फैमिली हमारी, आई एम वेरी लकी. आई हैव अ वेरी हेल्पफुल वाइफ एट होम एंड सी मैनेजेस ऑल माई household problems and also my clinic problems. And I only have to do is sit in the clinic, see the patients, collect the money and give it to her. So I don't have any problem with balancing this family life with DGs. If I am selected DG, I don't think there will be कोई problem नहीं होगी. मैं assure करता हूँ आप सभी को, आप सब हमारे दोस्त हैं, कि कभी ये टाइम का जो फैक्टर है हमारे बीच में कभी नहीं आएगा. और फैमिली आई विल ट्राई टू, जितना भी समय हो सकता है सबसे पहले फैमिली को दूंगा. एंड देन टू द प्रोफेशन डेफिनेटली जब आप डीजी के रोल में चले जाएंगे तो प्रोफेशन विल टेक अ लिटिल बैक सीट. बिकॉज प्रोफेशन से क्या है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उससे चलती है. बट अगर आपको रोटरी को समय देना है तो सेकेंड पार्ट जो है प्रोफेशन, उसको थोड़ा सा बैक सीट पर रखेंगे. एंड द थर्ड जो हमारा रोटरी है वो मेरे ख्याल से दैट विल कम इन द सेकेंड पोजीशन. थैंक यू. तो आपने अभी डॉक्टर अजय को सुना. एक चीज ही मिस्ड आउट टेलिंग, ही हैज ए पैरट, अफ्रीकन पैरट. यूं बड़े रंग बिरंगी पैरट है अफ्रीका से, वो बोलती भी है. वो भी इज पार्ट ऑफ हिज फैमिली. उसके बारे में जिक्र नहीं किया. आई एम इन लव विथ हर एक्चुअली, एंड दैट पैरट्स नेम इज रोजी. उसके बारे में बोला नहीं, पॉइंट नोट किया जाए. एक्स्ट्रा टाइम है क्या सर? आपके क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 गोइंग, दैट हैज गॉन टू बिपिन चचान. फिर से दोहरा दो, इज फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ पटना पाटलिपुत्र, सॉरी पाटलिपुत्र ओनली. तो ये है क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक इज द की टू सक्सेसफुल लीडरशिप? कैन यू टेल अस अ स्टोरी टू इलस्ट्रेट योर की? फिर से दोहराता हूं, व्हाट डू यू थिंक इज द की टू अ सक्सेसफुल लीडरशिप?
एक सक्सेसफुल लीडरशिप की चाबी क्या है, और अगर आप एक उदाहरण के तौर पे इसको समझा पाए हमको. सो इज दैट ओके बिपिन? शैल वी स्टार्ट? ओके ओके. जय जगन्नाथ, जय जम्बूरी. सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी रोटेरियन बंधु है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से, आप लोग के कॉन्फिडेंट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं आप लोग के सामने हूँ. मेरा क्वेश्चन है, एक सक्सेसफुल लीडरशिप की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कोई भी लीडर सक्सेसफुल होता है तो वो एक क्वालिटी की वजह से सक्सेसफुल लीडर नहीं होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी उसमें चाहिए. उसमें लीडर सक्सेसफुल लीडर होने के लिए उसके नॉलेज भी चाहिए, उसको कैपेसिटी ऑफ लीड करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको सबसे इम्पोर्टेंट है सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए. कैपेसिटी, सबको साथ लेकर चलने की कैपेसिटी होनी चाहिए. ये 5-6 जो क्वालिटी होती है उसी के कम्बिनेशन से कोई लीडर बनता है. हम रोटरी लीडर की बात करें, क्योंकि रोटरी की बात हो रही है, अब अगर रोटरी के लीडर की बात करें तो लीडर में ये सब क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है. इसको मेरे को बताया गया है कि आप एक अपना उदाहरण देकर बताइए इस कि मेरे में कैसे वो लीडरशिप की क्वालिटी को मैं एक उदाहरण से बताऊं. लीडर में एक क्वालिटी होती है सबको साथ लेकर चलने की क्षमता. और हम लोग को रोटरी के डे 1 से सिखाया गया है कि चैरिटी बिगेन्स विथ होम. अगर आपके घर में जो भी काम करना है आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए. और रोटरी में जैसे डॉक्टर अजय को क्वेश्चन था कि फैमिली के साथ में कैसे बैलेंस किया जाए, अपने फैमिली के साथ में टाइम लाइफ कैसे बैलेंस किया जाए, तो मैं लीडरशिप की क्वालिटी में मैंने भी जो अपने फैमिली को साथ लेकर चला. सबसे पहले मैंने वो चैरिटी स्टार्ट की, जो लीडरशिप क्वालिटी फैमिली को मैंने रोटरी में साथ लाया, उसको बिगिन फैमिली से किया. पहले मेरी वाइफ रोटरी शिल्पी, वो रोटरी से इन्वॉल्व नहीं थी तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको रोटरी में इन्वॉल्व किया और आज वो रोटरी में एक अच्छे ट्रू रोटेरियन है वो. और इसी के लिए ये मेरे सामने ज्वलंत उदाहरण है कि जो काम सबको साथ लेने की क्षमता है वो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया. यही एक क्वालिटी है. थैंक यू. तो आपने अभी बिपिन चचान को सुना. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज के वर्मा जी, इज फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ पटना. अगर आप अपनी सवाल नंबर कितना है? 9. तो ये उनका जो सवाल है, दैट इज हाउ वुड यू डिस्क्राइब डिस्ट्रिक्ट 3250 टू समवन अनफेमिलियर विथ इट. आप हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आप कैसे किसी को बताएंगे हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 के बारे में जो इस बारे में वाकिफ नहीं है? तो इसको समझाने वाले की जो उनकी क्षमता है वो 3 मिनट में वो कोशिश करेंगे. शायद एक नॉन रोटेरियन को अगर आप समझाएं कि 3250 जो क्या है, आई थिंक ही शुड गो इन दोस लाइन्स. प्लीज. थैंक यू. नमस्कार. जय जगन्नाथ. मित्रों, मैं मोदी जी के बाद से इतना प्रेरित हूं कि मन की बात आप तक कहने में आ गया. यहाँ पहले मैं अपना परिचय दे दूं. कमल नाम है मेरा. अभी तक हूं मैं किशोर, इसीलिए कहते हैं लोग मुझे कमल किशोर. दोस्तों, मैं कैसे लोगों को बताऊं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है और रोटरी क्या है मेरे लिए. तो हमने रोटरी को ऐसा डिफाइन किया है, ना पूछ कौन है, क्या है रिश्ता रोटरी से मेरा. ना पूछ कौन है, क्या है रिश्ता रोटरी से मेरा. मेरा प्यार, मेरा जुनून है
रोटरी इश्क है मेरा, रोटरी इश्क है मेरा। दोस्तों, हम लोग यहाँ 1937 से हमारा डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर स्टार्ट हुआ और हमारे इलाके में एक कहावत है, नहाया हुआ दे और खाया हुआ दे को परिभाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दिखाई देता है। रोटरी का काम 108 क्लब्स जो कर रहे हैं वो लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं रोटरी को डिफाइन एक और 4 लाइन से करूँगा। शब्द नहीं संपूर्ण वाक्य है रोटरी, शब्द नहीं संपूर्ण वाक्य है रोटरी, मानव सेवा का मार्ग है रोटरी, एक विश्वास एक भरोसा है रोटरी, एक विश्वास एक भरोसा है रोटरी। आप लोग ताली बजा सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मित्र है शाखा है, मित्र है शाखा है, यारों का यार है, मित्र है शाखा है, यारों का यार है, एक विश्वास एक भरोसा है रोटरी। हर जगह खड़ी रहती है रोटरी। आई लोगों को दिखाई दे रहा है, उपाड़ हो, हमारा डायलिसिस सेंटर चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबको दिखाई दे रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक विश्वास एक भरोसा है रोटरी। थैंक यू। हो गया सर। थैंक यू रोटेरियन के वर्मा जी। फिर से दोहराऊं, ही इज फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ पटना और he has spoken on the subject which was given to him. Up next is our dear Mukesh Saneja from Rotary Club of Ranchi. अरे वाह, क्या जोरदार ताली। यह हुई ना संगत वाली बात। तो मुकेश जी, आपके पास कौन सा टॉपिक नंबर थोड़ा बताइएगा। 4 नंबर है सर, नंबर 4। As a DG, you will be both a leader and a manager. As a DG अगर आप इलेक्ट हो जाओ तो आपको दोनों लीडर भी बनना पड़ेगा, मैनेजर भी बनना पड़ेगा। How do you see these roles intersecting? ये मैनेजर और ये जो लीडर वाली जो बात है, आप इसको कैसे संभालोगे? प्लीज सर। Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity this afternoon. Coming directly to the question, ये मैनेजर और लीडर की बात मैं कैसे संभालूंगा? We are all enjoying this beautiful afternoon since 2 days हम यहाँ के मज़े ले रहे हैं और ये इतना बड़ा काम शायद सिर्फ मैनेजर से नहीं हो सकता था. There had to be lovely leaders to give us this delivery. So this is what we are finding difference between the leaders and the managers. A manager, एक मैनेजर क्या करेगा? सबऑर्डिनेट को बुलाएगा, एक काम उसको देगा, उसका इवैल्यूएट करेगा, रिव्यू करेगा और वही एक मैनेजर का काम हो जाएगा. पर एज अ लीडर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आप में होनी चाहिए, द ह्यूमिलिटी, द कंपैशन. वी हैव टू बी गुड लिसनर्स. एज अ लिसनर, वी डोंट हैव टू लिसन एंड रिप्लाई, वी हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड. एक लीडर का और बहुत सारी काम है. अ लीडर हैज़ टू मोटिवेट. A leader has to fall back if there is a gap. A leader has to put himself in the shoes of his people to perceive what is the difference. हम एक बात सुनते हैं, हम एक बात समझते हैं, पर क्या उस बात को हम उस प्रकार से समझ पाते हैं जिस प्रकार से सामने वाला कहता है? Can we perceive it the way the other people thinks? As a manager we react. मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी बिजनेस चलाता हूँ. At times, as a manager, I react to something. But when I go back, I think, I put my thoughts into it, I feel maybe this was not right how I responded. So a leader has to figure out the ways of response. He has to have the ability to choose the response, maybe immediately, maybe later on. हर बात की जवाब उसी समय शायद नहीं देना होता. It takes some time to figure out. So a leader will have to do a lot of things. You have to review your plans. You have to build teams. A manager might not be required to build a team. I might be required to deliver at times, but my teams will have to deliver at times. So when my teams will have to deliver at times, I need to build the teams. I need to put confidence in the teams, and the leader should always stand behind the team. मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ,
आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, यू प्लीज गो अहेड। गलतियां सबसे होती है, हमसे होंगी, आपसे होंगी, हर आदमी से होंगी, ऐसा कोई नहीं जिससे गलती नहीं होगी। बट when we forget and forgive, it is the best way of delivering things. So we'll have to figure out when we need to act and our teams need to act. And this is the difference when I feel is from a manager to a leader. Thank you. Thank you, Mukesh. Thank you, Mukesh Taneja, Rotary Club of Ranchi. That was a good one. अब फिर अभी राउंड 2 में आ जा रहे हैं, वही तब का दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन उनके पास है। अगेन 3 मिनट्स। अब ये मजबूरी में नहीं है कि आपको 3 ही मिनट बोलना है। अगर इफ यू वांट टू स्पीक लेसर एंड यू आर एबल टू फुलफिल योर कंटेंट, प्लीज गो अहेड, डोंट वरी। तो अभी फिर से वापस आ रहे हैं हम डॉक्टर अजय कुमार टू रिपीट दैट ही इज फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ। उनके क्वेश्चन, आपके नंबर कितना है? हाँ 10। इनके पास जो अभी सवाल है जिसके ऊपर वो 3 मिनट बोलेंगे वो है, इन योर कैपेसिटी एज अ लीडर, व्हाट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैव यू ऑब्जर्व्ड इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस? इन योर कैपेसिटी, अगर आप एक लीडर के तौर पे कौन सी ऐसी अच्छी बातें हैं आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में देखे हैं जो शायद आप अडॉप्ट करें अपने में? प्लीज डॉक्टर अजय कुमार। सर, कैन आई कम टू द डाइस देयर? कैन आई टेक योर डाइस? थैंक यू सर। तो प्रतिम सर ने फिर से समय दिया है, लेकिन लग रहा है आउट ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सब है, हम बहुत सीरियस दिख रहे हैं, बट वैसा है नहीं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दोस्त हैं हम लोग। थोड़ा टांग खिंचाई हो रही है। सारण की बातों से मैं सहमत हूँ कि हम लोग कोशिश करें कि हिंदी में आप लोग की बात रखें। जहाँ तक बात रही कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा लगा जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए यू नीड मेंबर्स। हमारे कमल सर अभी थोड़ी देर पहले इतना अच्छा भाषण दे के गए, उसके बाद अगर हम लोग को सुनना पड़े तो जाहिर सी बात है तो नाइंसाफ़ी आप लोग के साथ हो रही है। तो हम लोग को पहले करा देना चाहिए था तो बेटर रहता है। जस्ट जोकिंग। तो हम लोग जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या सीख रहे हैं? तो बड़े क्लब्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में लायंस है आपके हैं, और जैसे मैं जुड़ा हूँ डॉक्टर्स फैटर्निटी से आता हूँ, तो हमारा जो है IMA से जुड़ाव है, बिहार ऑप्थेल्मिक सोसाइटी है उससे जुड़ाव है, उसके भी मैं एज ए एग्जीक्यूटिव कमेटी रह चुका हूँ। अभी हाल में मैं सेक्रेटरी से रिटायर भी किया हूँ। तो ऐसे एज ए लीडर, जो क्वेश्चन हुई कि एज ए लीडर अब क्या उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं रोटरी में, तो लीडर के 3 क्वालिटीज़ 4 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहला है कि आपको दूरदर्शी होना चाहिए। यू हैव टू प्लान अहेड। जो नॉर्मल लोगों को वो शायद वो नहीं हो, तो प्लानिंग आपको आगे की करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी ए मार्गदर्शक ऑल्सो, शो द वे कि अगर ये प्रोजेक्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ये चीज़ करने जा रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दिस पाथ। ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगी। और तीसरा चीज़ जो है वह समदर्शी, मतलब आप सभी को साथ लेके चलें। तो साथ लेकर जब तक नहीं चलेंगे तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं चल सकता। अगर लीडर बहुत आगे चला जाए और आपकी बोगी जो है यानी क्लब्स वो पीछे रह जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। तो मेंबरशिप पे ध्यान देना है, क्लब्स की संख्या बढ़ानी है आपको, और मेंबर्स को उसमें जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्लब्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गेट अ गुड लीडर्स ऑल्सो डूइंग, इसको ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ोतरी नहीं होगी। सो एंड द फोर्थ वन इज वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी होनी चाहिए। हम लोग जो भी अपना काम करें उसको लोगों को दिखाएं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा कर रहा है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। एक छोटी सी ताली चाहूँगा आप लोग से। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अजय। इट इज़ ए नाइस थिंग। अब यहाँ देखें, वहाँ से फर्स्ट राउंड में माइक में बोले, अब उनको दूसरे राउंड में यहाँ से बुलवाऊंगा। आने के दिन की आदत लगवाना चाहिए ना कि कभी इंडिपेंडेंट माइक में बोले, एक बार पोडियम में बोले। तो नेक्स्ट वी हैव बिपिन चचान,
रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्र, आपके क्वेश्चन कौन सा है? बोलिए, नंबर बोलिए ना सर। 6. What characteristics do you personally have that would make you an effective leader? आप में वो क्या क्या बातें हैं जो आपको एक इफेक्टिव लीडर के तौर पे आपको मदद मिले अपने आप में? तो he has to speak about himself. आइए विपिन जी, आप यहाँ से बोलिए। एक बार फिर जय जगन्नाथ, जय जम्बूरी। एक लीडर में क्या क्वालिटी होती है ये मैंने भी बताया, डॉक्टर अजय ने भी बताया, लेकिन मेरे में क्या क्वालिटी है वो मेरे को बताना है फिर से। रोटरी को जब से मैं ज्वाइन किया, 15 साल हो गए रोटरी में सर्विस करते हुए, तो रोटरी में बहुत कुछ बदला है, लेकिन रोटरी की कोर वैल्यू जो है वो बदली नहीं है। कोर वैल्यू रोटरी की जो 100 साल पहले थी वो आज भी है और अगले 100 साल में भी रहेगी। ये कोर वैल्यू क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 5 कोर वैल्यू आती है। फेलोशिप, इंटीग्रिटी, डाइवर्सिटी, सर्विस एंड लीडरशिप। अब इसमें मेरे पास क्या क्या क्वालिटी है जो मेरे को लीडर बनाया गया, उसके बारे में बताऊंगा। फेलोशिप, फेलोशिप मीन्स है रिसोर्सेज, सपोर्ट, नेटवर्क। आप जितना अपना फेलोशिप बढ़ाते हैं उतना आपका नेटवर्क बढ़ता है, उतने आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं। आप क्लब लेवल पर फेलोशिप करते हैं तो आपका जो नेटवर्क है रिसोर्सेज या क्लब लेवल तक रहता है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप फेलोशिप करते हैं तो आपके रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते हैं, और आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो आपकी फेलोशिप इंटरनेशनल लेवल पर रहती है। तो मैंने क्लब लेवल पे काफ़ी फेलोशिप इंजॉय किया। मैं लास्ट 10 सालों से लगभग हर डिस्ट्रिक्ट इवेंट को मैं जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। लगभग जहाँ तक संभव हो हर डिस्ट्रिक्ट कोई भी इवेंट छोड़ता नहीं हूँ। तो एक फेलोशिप की अच्छी मेरे पास पकड़ है, फेलोशिप है। मैं पटना जब आया था तो पटना में मैं कोई को नहीं जानता था, लेकिन आज पटना में क्या बिहार और झारखंड में बहुत लोग मेरे को जानते हैं। मैं कोई टाउन में चल जाऊं, मेरे फ्रेंड्स की कोई कमी नहीं है वहाँ पे। ये फेलोशिप की वजह से है। दूसरा पॉइंट है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी का यहाँ पे सत्यनिष्ठा मतलब है कि मैं अपने रोटरी के प्रति कितना वफादार हूँ, कितना सत्य उसके साथ में मैं जस्टिफाई करता हूँ, उसके वैल्यूज़ को, कितने कोर वैल्यू को मानता हूँ। निश्चित रूप से मैं रोटरी के कोर वैल्यू को काफ़ी इज्जत करता हूँ, उसको मानता हूँ। तीसरा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी काफ़ी मामलों में होती है। डाइवर्सिटी आप इंटरेस्ट पे डाइवर्सिटी हो सकती है, कल्चर डाइवर्सिटी हो सकती है, आपको सीखने की डाइवर्सिटी हो सकती है। मैंने यहाँ पे जो सर्विस रोटरी में दिया है, मैंने अलग अलग एरिया में सीखा है। मैंने मेंबरशिप में भी सीखा है, मैंने फाउंडेशन में भी सीखा है, मैंने पब्लिक इमेज में भी सीखा है। तो रोटरी से मुझे डाइवर्सिटी की काफ़ी पकड़ मिली है और मैं सब एरिया को मैं कवर कर सकता हूँ आज के दिन में, ग्लोबल ग्रांट हुआ या कुछ भी हुआ। सर्विस मेरा सबसे प्रिय विषय है। मैं रोटरी में अपने क्लब लेवल पे जब से आया, मैं सर्विस के प्रति काफ़ी मेरा झुकाव रहा है। मैंने क्लब लेवल पे काफ़ी सर्विस किए हैं। जब मैं 13-14 में जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने 2-3 नए कॉन्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट में सर्विस में लाया। मुक्ति रथ जो पटना का आज शान है, मुक्ति रथ मैंने अपने प्रेसिडेंटशिप में लाया सर्विस में। हैप्पी स्कूल उस समय कॉन्सेप्ट एक पायलट प्रोजेक्ट में आया था डिस्ट्रिक्ट में, मैंने उसको बिहार पहला डिस्ट्रिक्ट का पहला हैप्पी स्कूल मैंने पटना में बनवाया। काफ़ी मैंने सर्विस प्रोजेक्ट किए। फिर मैंने आगे भी जाके सर्विस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ किया। मैंने 3-3, 4-4 ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट भी किए। तो ये सर्विस में भी मेरे काफ़ी पकड़ है।
पांचवा पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप में जो मेन पॉइंट होता है नॉलेज, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और कैपेसिटी ऑफ लीड। मैंने बहुत सारे क्लब इवेंट, डिस्ट्रिक्ट इवेंट को लीड किया है। जो डिस्ट्रिक्ट सेमिनार लखनऊ में 2019-20 में जुनून हुआ था, जुनून उसको मैंने अपने क्लब की तरफ से मैंने लीड किया है। तो एक लीड करने की भी क्षमता है। तो मैं मानता हूँ कि एक जो लीडर में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मेरे में है। थैंक यू। कमल, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, उनका 5 मिनट्स हुआ है इंस्टेड ऑफ 3। ठीक, तो ठीक है। दिस वाज बिपिन चाचान फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्र। अब अगला हमारे के वर्मा जी हैं, रोटेरियन के वर्मा। ही इज फ्रॉम अगेन टू रिमाइंड रोटरी क्लब ऑफ पटना। आपकी टॉपिक नंबर बताइएगा थोड़ा सा प्लीज। 7। How this is a very nice subject. How would you build continuity of leadership between the preceding 23-24 and succeeding leadership teams of 24-25 and 25-26? ये जो है लीडरशिप की कंटिन्यूटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट की। ये 3 साल में उनका क्या थॉट्स है कि उनकी जो है स्रोत बने रहे, यही इसका मतलब है। पिछला साल, इस साल और आने वाले साल का लिंक बना के रखे, तभी रोटरी उन्नति कर सकती है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द क्लब लेवल। तो उसी के बारे में 3 मिनट आवर के वर्मा जी इज गोइंग टू स्पीक ऑन। अगेन नमस्कार दोस्तों। मुझे सब्जेक्ट क्वेश्चन मिला है कंटिन्यूटी पर। 3 साल की कंटिन्यूटी मैं कैसे बनाकर रखूंगा। तो सबसे पहले मुझे कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद कैसे करेंगे मैं उस पर बात करूंगा। दोस्तों, अभी जो ये पावर है, बिजली जल रही है, इसका प्रोडक्शन जमशेदपुर में नहीं हो रहा है, पुरी में नहीं हो रहा है। ये थर्मल प्लांट में बन रहा है और थर्मल प्लांट से वायर से यहाँ कनेक्शन आया है। अगर इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दें तो हम लोग ब्लैकआउट हो जाएंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी। हमको थर्मल प्लांट से लेकर अपने प्रेमाइसेस तक वो बिजली को लाने के लिए एक कंटिन्यूटी वायर चाहिए, तभी वो चलेगा, अदरवाइज वो ब्रेक कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट, मैं थोड़ा कंपैरेटिव बात करूंगा। एक प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो उनके बाद उनके प्रोफेशन का वो कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाता है। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई फैक्ट्री है, तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। रोटरी की कंटिन्यूटी बनी हुई है। 1905 में रोटरी बना और आज हम 2022 में हैं। ये कंटिन्यूटी बनी हुई है। इसके 2 कारण हैं, एक इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। हमारे जो 2 साल पहले हैं या 2 साल बाद आएंगे, उनके साथ हमारा तालमेल, रिदम बैठना चाहिए और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। बट पार्टिसिपेशन इज नॉट एनफ। हमें कंट्रीब्यूट करना है उनके प्रोग्राम्स में, उनके इवेंट्स में। और जो मैं करूँगा वो कंट्रीब्यूट करूँगा रोटरी के ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। हमारे जो पहले से जो चीज़ प्रोग्राम चली आ रही है उसको आगे बढ़ाना है मुझे। इसका एक और मैं एग्जांपल दूंगा। हमारे जो पहले आ रहे हैं, जो डीजी आ रहे हैं, कभी उनके जूता पहन कर देखना चाहिए, उसमें कितना कील है, दर्द कितना है, तभी हम उस कंटिन्यूटी को आगे बढ़ा पाएंगे, उनके दर्द को समझ पाएंगे और हम आगे उसको बढ़ा पाएंगे। अगर कील है तो कील को रिपेयर करेंगे और उसको कील को निकालेंगे उसको, तब हमारा लाइफ स्मूथ होगा। अदरवाइज
कंटिन्यूटी ब्रेक करेगा तो हमारा ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी बड़ा प्रश्न चिन्ह पर आकर रुक जाएगा। थैंक यू। So this was Rotarian K.K. Verma from Rotary Club of Patna. सर अपनी जगह में चले जाइए, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर का उधर कैसा हो रहा है। तो लास्ट हमारे बीच में द फोर्थ कैंडिडेट मुकेश सनेजा फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ रांची। तालियां। बस आखिर आपके टॉपिक नंबर 8। How does your vision of Rotary integrate with a strategic plan? हमारे जो रोटरी की स्ट्रेटेजिक प्लान और उनकी विजन को कैसे वो मिलाए, इसको मेल खिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, इस पे बोलेंगे हमारे मुकेश सनेजा फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ रांची। एंड प्लीज, ही इज द लास्ट ऑफ द लाइन। आप अपनी जो है ओपिनियन जजमेंट बनाते रहिए। आइए सर। Thank you so much, District Governor Pratim. And once again, I come before you. The strategic plan है रोटरी का, the पहला है उसमें increase our impact, उसमें दूसरा है expand our reach, और तीसरा पॉइंट है उसमें involve members, और चौथा है अडेप्ट टू चेंज। ये चार चीज़ें जो स्ट्रेटजिक प्लान में मैं नटशेल में बता रहा हूँ, दीज आर द 4 थिंग्स दैट आई फाइंड इन द स्ट्रेटजिक प्लान ऑफ रोटरी। एंड हाउ डू आई पुट दिस इनटू माय विजन, और मैं क्या सोचता हूँ, हाउ कैन आई वैल्यू एड टू व्हाट रोटरी इज टुडे। आप और हम सब यहाँ आए हैं और हमने देखा है कि एक बहुत अच्छा मंत्रा हमें शेखर मेहता जी ने दिया है, ईच वन ब्रिंग वन। वो क्या है? ईच वन ब्रिंग वन से क्या होता है कि हम अपना रीच बढ़ाते हैं। द सेकेंड है द रीच, हाउ डू वी रीच, इंक्रीज द रीच ऑफ रोटरी। व्हाट आई ऐड टू दिस, व्हाट आई वुड लाइक यू टू ऐड टू दिस इज ईच वन होल्ड वन। ईच वन होल्ड वन करने से क्या होगा कि हमारे जो आज मेंबर हैं जो चले जाते हैं, हम मेंबर लेके आते हैं और मेंबर चले जाते हैं, इससे दुखद घटना किसी को नहीं होती। भाई कोई मेंबर लेके आता है, मेंबर चला जाता है। सो इफ ईच ऑफ अस प्लान टू होल्ड वन मेंबर, डू हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप वन मेंबर, आई थिंक द सेकेंड स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ रोटरी विल बी फुलफिल्ड। वी विल एक्सपैंड आवर रीच बाय होल्डिंग वन मेंबर। होता क्या है, हमारे मेंबर्स को पर्पस नहीं मिलता है, हम मेंबर्स को उठा के ले आते हैं, चलो भाई रोटरी में चलो, हमारा एक संस्था है रोटरी में चलो, वी एंजॉय दैट, वी सिट देयर, वी टॉक देयर, डू व्हाटएवर वी हैव, एंड आफ्टर 6 months, 8 months, 1 year, 1.5 year, वी फाइंड दैट पर्सन गेट्स डिसइंटरेस्टेड, उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। हमने फिगर आउट नहीं किया, उसने फिगर आउट नहीं किया कि उसको रोटरी में क्यों लाया गया, एंड देयर इज द लीकेज। एक बैग में हम ऊपर से कितनी भी चीज डालें और नीचे लीकेज हो तो क्या होगा, द सम टोटल ऑफ व्हाट वी पुट विल ऑलवेज बी लेस देन व्हाट वी गेट, there will be a leakage. So my vision is we need to retain members, we need to handhold members. That is one thing that fulfills the second strategic plan of Rotary. The first strategic plan, Rotary, is increase the impact. How do we increase the impact? The increase the impact is by adding more youth to Rotary. हम आप सब जानते हैं रोट्रैक्टर की काबिलियत पे कोई शक नहीं कर सकता है। आज हमने देखा, हम यहाँ आए थे, रोट्रैक्टर लोग लगे हुए थे, स्टॉल में मैनेज कर रहे थे, दे वर डूइंग वंडरफुल वर्क। एंड लेट मी टेल यू, 106 bottles of blood they have done in 4 hours. 600 polio booths were mentored for 1 day for Rotary. So if we want to increase the impact, we need to add the youth to the Rotary, the rotractors to the Rotary, and they will better connect, क्योंकि Rotary का खून उनमें पहले से दौड़ रहा है। And this is how I came to Rotary. I was a rotractor, so I can figure it out much better, I think. The third is, हम क्या कर सकते हैं उनको adaptability के लिए। Can we change? Yes, we need to change. The Rotary is changing, we also need to change. We need to change how we interact with people. Zoom meetings ने आके एक नया change हमें दिया है। People are more comfortable with virtual meetings twice a month,
and physical meeting twice a month. This is what also we have found, you know. अगर members नहीं आ सकते हैं तो बोलते बॉस एक वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए ना, चलिए आइडिया शेयर हो जाएंगे, हम मिल लेंगे, हम बातें कर लेंगे, हम कुछ प्लान बना लेंगे, हम कुछ एग्जीक्यूट करने की बातें कर लेंगे, हम कुछ डिलीवर भी कर लेंगे. So I think that is one more vision. I think we should adapt these to give the third strategic plan of Rotary. And the fourth one is, do I have time? And the fourth strategic plan is to adapt, expand, and increase our impact. The first one, increase our impact by training. Training is one thing missing in our systems. We need more of training. We need more of skill sets to be shared with people. लोगों के साथ skill set हम share नहीं कर पाते हैं. हमारे Rotarians के पास एक RLE का कोर्स हमने fortunately अभी किया थोड़े दिन पहले, और हमने देखा कि so many things are there that we don't know. हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं. So if we are better skilled, we are better trained, we are better adapted, I think our deliveries will be more, and we will be better Rotarians, and we will have more vibrant Rotary clubs in the days to come. Thank you so much. Thank you, Mukesh. Rotarian Mukesh Taneja, Rotary Club of Ranchi. एक छोटे बस I am personally looking forward to have one of them as the governor, and myself the privilege of shaking hands with me and giving them a bouquet and wish them good luck. So please everybody give them a big hand, and hopefully we will follow the Rotary protocol, election protocol. आप सब इनकी मदद कीजिए, एक अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से अपनी सोच समझ के अपने आने वाले लीडर को चुनिएगा. सारे चारों तो उम्दा हैं, मैं तो अभी फुल्ली कंफ्यूज्ड हूँ. अगर मेरे को इन चारों में चुनना होता, मैं तो अठन्नी उछालता. हमसे नहीं होता इनकी बातों से समझ के कि चीज़ क्या है. बड़े बड़े चीज़ है ये. Thank you very much. So that's great of you. Thank you. Please take over. Thank you, Governor Pratim. And thank you all our future leaders of District 3250. I now invite DGE Sanjeev Thakur and Poonam for on to Kolkata and invite to pets. And before that, I've got an announcement. हमारे कॉन्फ्रेंस चेयर दीपक जी ने बताया है, जिनको जल्दी जाना पड़ रहा है, जिनकी ट्रेन अर्ली है, आपके फूड पैकेट्स तैयार हैं, आप खाना लिए बगैर नहीं जाइएगा. फूड पैकेट्स डाइनिंग हॉल से लेके जाइएगा. और जो रात को ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका ट्रैवल रात को है, उनके भी डिनर पैकेट्स रेडी होंगे. प्लीज़ अपना डिनर पैकेट्स लेके जाइएगा. On to pets, on to Kolkata by DGE Sanjeev and Poonam. Thank you. Let me invite the host, Patliputra Club. Please, President Tode, come. अभी हमारे गवर्नर प्रतीम ने कहा था, इस कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन में हम हैं. अंतिम दिन में है, अंतिम क्षण में नहीं है. थोड़ी देर के बाद एक पॉज बटन हम डालने वाले हैं, और उस पॉज बटन को फिर लाइव हम करेंगे 6 मई को JW मैरियट कैलकाटा में. रोटरी व्हील की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है. वहाँ एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक बस पॉज बटन ऑन होता है. पॉज बटन को फिर लाइव बटन में कन्वर्ट किया जाता है. आज हम यहाँ आनंद ले रहे हैं. मैं ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब पाटलिपुत्रा अगले सत्र के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इलेक्ट ट्रेनिंग सेमिनार्स के लिए आप सबों को इनवाइट करता हूँ, तहे दिल से आमंत्रण देता हूँ. JW मैरियट एट कलकत्ता 6 to 8 May. I will not say कि बेहतर अरेंजमेंट होगा. सॉरी, आई एम नॉट इन कंपटीशन विद प्रतीम. आई विल ट्राई टू बी एट पार विथ. मैं यहाँ हूँ, प्रतीम वहाँ होगा. आप यहाँ हैं, आप वहाँ होंगे. रोटरी वहाँ होगी, रोटरी यहाँ है. और दिस रोटरी
should keep on moving from one place to another place, 1 year to another year. So now I ask President and all the members of Rotary Patliputra to make a presentation for our pet set at JW Marriott from 6th to 8th May. Come on. होपफुली यहाँ बहुत कम लोग रजिस्टर्ड होंगे। जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जो रजिस्टर्ड नहीं हैं वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। थैंक यू। Hello. Hello, fellow Rotarians. My name is Bond, James Bond. We are Patliputrans from Rotary Patliputra. We invite all the incoming bonds of District 3250 To JW Marriott, Kolkata on the 6th, 7th and 8th of May. for pets and sets under the leadership of 007 District Governor-elect Sanjeev Thakur. So the theme is on James Bond and we've named the program as Never Say Never Again. All of you. All the Rotarians along with their spouses are welcomed. I invite all the President-elects and Secretary-elects of District 3250 to the training seminar to Kolkata. You will get training from Thakur to become bonds. Thank you. अब ये कुछ ठाकुर कुछ ज़्यादा ही कमल साहब की कृपा हो गई है। जस्ट टू कंक्लूड, और जब सामने आप बैठे हैं तो दो शब्दों के इत्तेफाक में यूँ बदलाव करके देख, तो देख कर ना मुस्कुरा तो मुस्कुरा के देख। और इसी मुस्कुराहट में रोटरी निहित है, यही रोटरी समाहित है। What a wonderful way to start friendship and fellowship if we start the day with a smile, muskura ke. And our RI president keeps on saying, serve to change lives, share with others, care for others, and that all should come from inside. And if that comes from inside, it comes with a smile on your face. So muskura ke dekh, be cheerful, start planning to attend the next function, one and all of you. Thank you. Never say never again. Never say never again. Thank you. All of you are welcome to Calcutta again. Looking forward to see everyone there. Thank you. Thank you, Governor-elect Sanjeev and Poonam and the entire team. हो सकता है आपका हॉल छोटा पड़ जाए, यहाँ सब अगर रजिस्टर करा लेंगे तो I would now request DG Pratim and Suchanda and our RIPR Madhav and Sujata to please come and take their seats on the dais.
L- Leo Tolstoy said, "The two most powerful warriors are patience and time." Our smiling, friendly, charming and amazing couple, our chief guest of for the last 3 days, RIPR Madhav Chandran and his beautiful, lovely, sweet wife Sujata have shared their time patiently with us for the last 3 days. I request RIPR Madhav to give his closing remarks. Governor Pratim and Suchanda, my respected friend, past RA Director and your own PDG, Kamal Sangvi and darling Sonal, galaxy of past, present and future leaders of this district and Rotary, my dear friends in Rotary. Once again, I express my heartfelt gratitude to our world leader, Rotarian Shekhar Mehta and Madam Rashi for assigning me this task of coming to this wonderful district. And of course, heartfelt gratitude to someone who is more than a guide, mentor and brother to me, Kamalji and sweetheart Sonal, for everything that you bring into our lives. I bring greetings from our RI President and convey all that, and I will convey all that myself and Sujata have experienced and witnessed here as my report on this Jamboree conference. So Jai Jagannath, Jai Jamboree. I think the energy levels have gone down after all those meet the candidate sessions are all done. Well, so let me share my report, a brief one, or my remarks as Anu rightly said, on this fabulous conference Jamboree. Our leader Shekhar Mehta called out to celebrate Rotary, and you did exactly that in the last nearly 36 hours. Governor Pratim, what do I talk about you? He has been so comfortable, flamboyant, and in complete command. In fact, the moment I was thoroughly impressed about his character was when, due to some glitches of technology, the PPT didn't come up when the governor is on stage. And he took a deep breath. I saw that because he was obviously getting agitated because he had the entire presentation there that was not to be shown to the governor of Odisha. And he looked like this. He changed his stance, looked into the eyes of the respected governor and gave a complete narration of what all 3250 has been doing, and put your hands together for that. That is what the cool composure of a leader is all about. And he has been doing that, showing that all throughout this conference, which I could see. And Suchanda, always like a rock behind him, with him, by the side of him, and at times in front of him. And of course, Siddharth. Where is Siddharth? He was there. Siddharth was also... Chirag, okay. He was also there. There, sorry. He was also there. It's not too often that you see children coming in and taking part so actively like this. Maybe because of their assignments outside or otherwise too. But you have been a sweetheart. Thank you so much for being there. Now coming to our lead couple of this seminar, the chairman and his chairwoman, if I would say. The two DDs, Deepak and Deepali. You literally took the conference on your shoulders. Literally. Seamlessly carrying the entire proceedings like an MC at times, like a captain at times, like a master of ceremony, or all kinds of things you're doing, really in total control of the situation. And Deepali, where are you with that? Yeah, with that kind of a problematic leg, you have been doing all that you could to support him and support all of us to make this event such a wonderful one. Now, when the event started, that colorful parade which you created
with the real Jamboree effect. The 7 host clubs, the ladies especially leading from the front, that was indeed really good. And the invocation dance by the Puri Dance Academy, I was really impressed by the oratory skills of the teacher, the guru there. She was actually giving a real inspiring address. And my newfound beautiful friend, where is she, Dr. Veena, and a team, rendering that invocation, that really set the tone for the entire proceedings. And my own aide, Mr. Sachdeva, Rotarian Sachdeva, also chipped in with this song there. I can't find him. Yeah, he's there. Yeah, he's also there. That's when I started seeing his talents one by one. The Puri Club leaders also chipped in with their message and the way in which they came on stage. And that is a wonderful gesture from your side to give them the recognition of being here in their territory and getting them on stage in the first opening note itself. Very important to keep the local clubs engaged in such a grand event. You did that. Of course, the sessions were so outstanding. We heard Mr. M.K. Singh with his eloquent oratory skills as well as his singing talent being displayed here. He spoke about service and faith. Thereafter, we had Dr. Deepak Shikarpur talking about the interesting topic, Jo Dikta Hai, Wahi Bikta Hai. I mean, of course, he is such a master speaker and he did that in such a short span of time. With the time running short, he was running through that, but the message was very clear. Of course, we had a scintillating evening to let our hair loose. Maybe not for me, though for obvious reasons, but for others. The show belonged to the Rotary clubs actually. That's one thing which I saw, those who came up with such an amazing stream of performances that they hired professional team, which was arranged by our organizing committee led by DDs. They didn't get the time actually to perform because the clubs were so much involved with their performances. And that is something which I was really impressed with, the kind of involvement and participation of your clubs all across the district. The next day morning, the Zumba dance in the beach and walking on the beach all kept the members engaged, and it made it very interesting for the day. And the second morning too saw different invocation by my own friend Rajendra. He gave away that song, Kisi Ki Muskurahat Ke Liye. That one was setting the tone for the day. And my friend Mr. GSS Krishna came up from TCS, though it was slightly technical, but he actually showcased some of the trends in education, trends in career, and it could be useful for our families. It's all part of a conference to give something for the families also. That way it was good. And with this Everest climbing process as a parallel to Rotary activities was Dr. Lakshmikant Kasat. Obviously that was a very engaging session which we had. Thereafter Rotarian Ulas Kolatkar spoke on how to run that extra mile. Such an inspirational address with a lot of interesting slides he had presented here. Good one. But the presence of the Honorable Governor of Odisha, Ganesh Lal, added the real value to your conference, giving so much of public image to the event. His Excellency appreciated the efforts of Rotary and 3250 in particular, thanks to our Governor narrating almost all the projects which are really making you proud. And in fact, he also bore with the that glitches and all. He was not bothered about it. He was so nice and humble that he cooperated with us and spoke so well and in praise for our district and Rotary. And he honored all the donors of your district. That's very important, to give importance to such donors. And all these were well stitched by none other than Dr. Amit Mukherjee with his baritone voice. So spontaneously he was doing that. It's not easy to do an emceeing when an official like a governor is sitting on stage. And Simran, obviously your Miss India, whatever you call her, she was also complimenting Dr. Amit so well. And Amit obviously showed his amazing singing talents also when the opportunity came. Doctor, you're there, I guess. I hope you're there. Dr. Amit, you're not there in the stage. He's not there, okay. And of course, one highlight which I found was the skit by Jharkhand Club. That was really good. There a lot of contents, a lot of substance, a lot of message in that. The skit or the mime, I would say, which was performed by the Jharkhand Club. And one thing I was noticing all throughout, since the first day I landed here, was the involvement of Rotarians, as I've told you in the beginning, and especially the lady Rotarians and the ladies also here. Wonderful involvement. Put your hands together for all those lovely, wonderful ladies who are there. I'm sure you must have all enjoyed
preparing for those performances more than the performance itself, because the preparatory sessions are more interesting than the session itself. So preparing for these events, putting those dresses and making those trials, I'm sure you all would have had a lovely time. You must be thanking the chairman and the governor for giving you this opportunity, and wonderful, keep it up. That's something which is very unique to your district, I must say. And of course, our DRFC Sanjay, he came with a topic of TRF at a time when everybody was waiting for the lunch to be served, but then he did a fabulous job of giving a spontaneous explanation of what is happening in the district, making us all proud of what all things we are doing with TRF and what all things your district has done. And it was an eye-opener for me, because your district's figures are actually not reflecting the kind of contribution you guys are doing, to be very honest. I mean, he's talked about the $300,000, being low, but then it's all being done by your generous Rotarians, and it is just that you are donating to Rotary and not taking anything back. And that's why I was telling you in my opening remark also, you must actually start taking things back from the foundation also, taking things back from the Rotary also when you are contributing, because this 300,000 can very well become 3 million when you take it back from Rotary, when the project size can go up. So it's actually, you're sitting on a kind of a treasure which is not yet open. I must say that you must go and engage all your clubs with wonderful projects so that your figures can go up monumentally. And those PHS members, 27 of them coming on stage with those befittingly decorated certificates given, I must give a big hand to DRFC and the governor for framing those certificates. And normally all the districts will give a certificate just like that. Put your hands together for the PHS members as well as for the leaders who actually appreciated their contribution, because that framing made the difference. Because you give a certificate, it may not even reach your homes. Actually, it will be there in your kit. But when a certificate is given, I'm sure most of them will find a place in the office space or in the drawing room of your homes. Wonderful. And I'm sure this is little more of fine tuning, and the TRF figures are bound to go leaps and bounds. I'm sure Sanjeev ji, you can definitely be confident about that, because this kind of donors, I've found so many lady Rotarians coming up again, coming and getting this PHS members. Maybe Baranga Sujata or maybe 2-3 other ladies in our district of 6,000 plus members. I won't find anybody who's coming up to collect a PHS certification or a multiple Paul Harris Fellow certification for that matter among ladies. So that's why I said you are actually sitting in front of a treasure which has to be opened. Wonderful. We had the COG in the evening. I had Council of Governors meeting. I had the privilege and honor to actually attend your esteemed Council of Governors meeting. And I was really impressed with the cordial way in which the discussions went on. Criticism, support, complimenting, firm points being conveyed. Wonderful. Your district is in safe hands with the past, present, and the future leaders all, cooperating together so well and joining hand in hand to take it forward. And of course, in the evening, a good darshan. Thanks to again Deepali. Deepali arranged the whole thing with in the august company of our past RA director and his charming wife. And of course Kamal, the other Kamal Makhati and Raksha, if I'm not wrong, Raksha is there I guess. Yeah, Raksha, and of course the lovely talented daughter, who was taking pictures of us sitting in the cycle rickshaw. I'm waiting for that pictures to be transferred to me. Wonderful darshan also, because without a darshan to Jagannath temple, the trip to Puri is not complete. So we had to go, and even though it was so crowded, all of us had a good darshan there and came back. And the evening, that was an atmosphere, it was something which was electrifying, I must say. We just, missed a bit of it, but when we came in itself, we could see that. The first day was getting the hair loose, but the second day was getting it foot loose. Foot loose by all sense, from, as the governor was saying, from that side to this side to that side. It was electrifying and the energy was so positive, and that's exactly what a conference is all about. Once you do something good, celebrate it. You were doing exactly that, and that's really good. And today morning started off with a complimentary foot massage. That's something very innovative. Good chairman. Complimentary foot massage and the Malai cheese toast, Malai toast, I would say. My wife was talking about it all throughout Sujata, and she skipped the breakfast there even at 9 o'clock also, and came here and had the Malai toast. And wonderful way of starting the day, and the day was made memorable, so memorable, Madam Nikki Kaur. You made it so memorable, and your son Ajay Raj. And she reminded us again and again that it is not just sympathy, but empathy, empowerment, encouragement, and engagement that they need. And that is just a reminder to all the Rotarians that what we are doing, we are in the right direction.
but these are the people who actually are there as role models, unsung heroes, we can say. They are there. Thank you so much, ma'am. And you saw our world leaders comment on your speech, and we are there to support you. It's wonderful to have you here with us. Continue your good work and strive forward. And what do I say about the talk of our own great friend and guru, Kamalji? I'm no person to comment on his speech. He has his habit of giving everything to his friends. That's one thing he does always. And when his good friend, where is the MC gone? Anu, yeah, she's gone there. When she called out and said that, Kamal, come and steal the show. He has to do that, no, because he did that. He did exactly that. He stole the show with the firebrand speech, which was something which only he can do. He made everybody get out of the hall. Can you believe that? All those who were comfortably seated here, that too the ladies, comfortably seated, they all went out and came back, and such an energy which he actually, he radiates, that he gets into all of us. And thank you so much for an enlightening and enriching address as always. And of course, our youngest PDG here, Sandeep Narang, so comfortable with resolutions or anything given to him, so he did it so well. Thank you so much for all those resolutions, well articulated and written. And the Meet the Candidate session was something unique for me, because we don't have that in our district. And a wonderful way of presenting the candidates so that all of us could see what they have in them. And our governor, again, in total command of the situation. He even moved one candidate to the other position. So that is a kind of cool composure which he had. Wonderful way of doing that. And I'm sure one of them will come up and join us as a part of our College of Governors very soon. All the best for all four of you. Winning and losing is part of the game, but then come up one of you as a great governor later on. Now I must put on record some of the things which are really good in this event. Technology backing, which was almost near flawless. There, those people who are sitting there. And the lucky dip, which was done so well with an automated raffle kind of a thing. It was really good and ably managed by our captain, always Didi, standing here and calling out names of all those people who are there in the hall. And the message tree outside, kept outside, something unique which was kept outside. The message tree, I don't know how many of you have written their message and put it on the tree there. That is kept outside. The display hoardings on the roads and on the pavement, obviously adding public image to the event and the conference. So altogether, it was something really fantabulous. And if you ask me what were the highlights of this conference, excellent arrangements altogether, outstanding speakers, scintillating entertainment, delicious food spread, and above all, unmatched bonding and camaraderie. That's something which was there. Put your hands together for a fabulous, fabulous conference. It shows the vibrancy and vitality of this district, and all of you can be proud of that kind of a bonding which is there. Long live that bonding. And now, before I conclude, to express my thanks to a few of the people who made this conference possible and present special. As a token of our love and gratitude, may I request Governor Pratim and First Lady Suchinda to come over and receive a small token of our love and affection to you for getting us over here and being the best host that you could ever be. Next is our fabulous chairman, the first DD and his second DD. Please come on stage. Deepak and Dipali, for a fantabulous conference which they have gifted you as chairman and partner. Where is Dipali gone?
Dipali, can you manage with your painful leg? That is it. What are these for? This also. Now, as a token of our love and gratitude to the entire district, I present a small memento to your incoming leader. He is the future for you. The incoming leader, DG Sanjeev Thakur and Madam Poonam. Please come forward. This is for you, for the district in safe hands. Where is it? Yeah, Poonam is there. Last but not the least, my newfound friends, very important people in our presence here, Rotarian Rajendra Sachdeva, and the second Sujata in my life now, Sujata Sachdeva. So friends, not taking too much of time, I sign off along with Sujata with a lot of learnings, having forged so many friends, new friends for a lifetime, and a heart full of gratitude for such memorable moments that you created at Jamboree. Thank you all and love you lots, Godspeed and all good wishes to each one of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. The way he has acknowledged. अब क्या बोल सकते हैं सर, एक तालियां छोड़ के तो हम अपनी दिल की भड़ास इन तक पहुंचा नहीं पाएंगे. एक जोरदार तालियां लगवाएं सर. इतनी तारीफ सर इनकी बनती भी है कि कोई त्रुटि भी हो उसको भी हाईलाइट करें. मगर वी वर वेरी सक्सेसफुली कि उन्होंने हमें कोई त्रुटि देखा नहीं, खाली प्यारी और मोहब्बत ही हमारे ऊपर इज़हार किया उन्होंने. Sir, if I may be allowed
We too also have our expression of gratitude for him spending his 3 days with us, for being a good friends for us, and on behalf of 3250 and for ourselves, we want to express our gratitude to them. Please, sir. Thank you so much for those beautiful closing remarks. We could see you have really entire conference, and so beautifully you acknowledge the hard work put in by everybody. Thank you so much, Rotarian Madhav. We have Conference Chair Deepak Dokania. We would like to present a token of gratitude. DG Pratim, Suchanda, Conference Chair Deepak, please do the honors also. Dipali, Rotarian Anjani, Juma. A token of gratitude to our RIPR. Deepak, you also required downstage, please. Now we have our conference chair, Deepak Dokania, to make some announcement. The most important announcement is that fellowship is on. Fellowship is on, you can enjoy. Let me first start by thanking all those who helped us with sponsorships and for the financial support to the conference. May I start by calling Amitava Bakshi on stage, please. Amitava is not there. Aloka, you can come. I'll request Pratim, Suchanda to be on stage, please. Aloka, you can come. Without their support, we couldn't have organized this conference. Amitav Bakshi, Rotary Club of Chanakya. Anybody from Rotary Club of Chanakya? Archana ji, you are there? Rotary Club of Bihar Sharif. Rotary Club of Bihar Sharif. Yeah, one for Aloka ji.
Rotary Club of Patliputra, Rotary Club of Bihar Sharif, Rotary Club of Patliputra, Rotarian Sanjay Saraf, Rajendra Sachdeva. Thanks Rajendra for all the help. Sanjay Kedia ji, Mr. Sanjay Kedia. Sanjay ji, where are you? Yeah. All the club presidents of the Rotary Club of Jamshedpur, minus the president of the Rotary Club of Jamshedpur West. The other 6 presidents can come now because I will be calling the West president later on. Can we have the presidents or the representatives from the 6 Rotary Clubs of Jamshedpur, Jamshedpur Midtown, Jamshedpur Femina, Jamshedpur Dalma, Jamshedpur Steel City and Midtown. Will she be able to come? Will she be able to come here? But anybody, you come now. Okay, Dr. Bachu Master from the main club, if you come, Jamshedpur. Mona is there. Yeah, Rotary Club of Bihar Sharif. Sanjay Kedia ji. Rotary Club of Bihar Sharif, Rotary Club of Jamshedpur. Big round of applause for the Rotary Club of Bihar Sharif. कोई बात नहीं है. Rotary Club of Jamshedpur is here. Femina is also here. Yeah, Midtown is also here. Anybody else from Jamshedpur? Steel City, our charter president, who else can come? Steel City Charter President Smita Parikh, Anurag Patra from the Dalma Club, Rotary Club of Patna Midtown. Anybody from Midtown? And last but not the least, संजय शराफ जी कहाँ? आइए आइए. संजय जी पीछे क्यों हैं? मिस्टर संजय शराफ. बाद में. मिस्टर संजय शराफ. Pratim, have I missed out anybody on the financial support part? May I now request the President of Jamshedpur West, Rajesh Kumar, Secretary Neeta Agarwal. A big round of applause for the Jamshedpur West. इनके सपोर्ट के बिना कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाता. और जोरदार तालियां होनी चाहिए जमशेदपुर वेस्ट के लिए. Great support from the West Club. May I call upon President Rajesh and Secretary Neeta to be on stage, please. Pratim, your host club presidents, Rajesh and Neeta. A big round for applause for the Rotary Club of Jamshedpur West.
A big round of applause for Rajesh and Nina. Thank you very much. This was all on the financial part. Best dressed male for this morning. Best dressed male. Raj Kishore Singh from Patna Kankad Bagh. Are you there? Raj Kishore नहीं है? नहीं है क्या? हैं? आइए सर आइए. Best dressed male Raj Kishore Singh from Patna Kankad Bagh. Best dressed female Bhavna Taneja from Rotary Club of Ranchi. Best dressed female Bhavna Taneja, Rotary Club of Ranchi. मुकेश जी कहाँ हैं? आइए. Best dressed couple goes to Sanjay and Babita Kedia. Sanjay and Babita Kedia for the best dressed couple. And the Gadia couple, Shashi and Shiv Shankar Gadia, for the best dressed couple. There are 2 prizes. Best dressed club. S से शुरू होता है. S. Samastipur. Saran is the club. Best dressed couple. ये भी है. हाँ ठीक है. सारन जी एक आदमी आइए सर. एक आदमी. बेस्ट ड्रेस क्लब में सारन. देन वी हैव जमशेदपुर वेस्ट. बेस्ट ड्रेस क्लब फॉर टुडे. रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा एंड रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर. Chair membership Depriya Mukherjee ji, if you could please come here. पाटलिपुत्रा बेस्ट ड्रेस क्लब यहाँ अवार्ड होगा रखा हुआ. हाँ आगे आने दीजिए. आओ चलो. बेस्ट ड्रेस क्लब रोटरी क्लब ऑफ सारन. एंड देन वी हैव जमशेदपुर वेस्ट. देन पाटलिपुत्रा और मुजफ्फरपुर में टाई हो गया है. हाँ करो. पाटलिपुत्र और मुजफ्फरपुर में टाई हो गया है. मुजफ्फरपुर सर में आपका ट्रॉफी चूंकि टाई हो गया आपके यहाँ भेज दूंगा. ठीक है. हाँ बुके तो आप दीजिए ही. आपकी ट्रॉफी में आपको शील्ड में आपको वहाँ भेजूंगा आपके. What is this? This is best. And just announce location हाँ. for best.
रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट, पाटलिपुत्र आपका हो गया? मैं दे दूंगा ना. ओके सर, the Jamshedpur West Club wants to be on stage to give the prize for the best dressed. Ma'am, you also. Our club includes the DJ also who is dressed. Can we have all the members of the Jamshedpur West on stage, please? All members of Jamshedpur West. All members from Jamshedpur West. We have another prize for the best dressed couple, Hitesh and Akanksha Bhagat. Are they here? Hitesh and Akanksha Bhagat. Which club? रांची. रांची सारा प्राइज ले जाएगा क्या? आइए आइए. हितेश जी सोच रहे थे मैं इतना बढ़िया ड्रेस पहन के आया हूँ, पत्नी के साथ हमको बुलाया क्यों नहीं गया? So thank you, the Rotary Club of Jamshedpur West. Be ready to host the celebration party at Jamshedpur. That will be sponsored by the Rotary Club of Jamshedpur West. President, आपने मेरी बात सुनी, राजेश? We'll have a celebration party at Jamshedpur hosted by the Rotary Club of Jamshedpur West. Yes, Iraq. We'll do that. We'll invite all the clubs. Yes, thank you very much, Rajesh. Chetan and Hitesh and Akanksha Bhagat, the best dressed couple. We have a best dressed Rotary led, Adit Chand. Where are you, Adit? Please come. The best dressed Rotary led. Congratulations. Come. Please come here. Come here. Thank you. Shweta, where is the list for the AGs? The AG with the maximum registration from his or her district. He has to announce some prizes. Maximum registrations from zone 17 and 18 combined. AG Sangeeta Jha and Shweta Chand. Can we have both on stage, please? Sangeeta Jha ji and Shweta Chand, the AGs of zone 17 and zone 18. Next is zone 20, AG Devender Singh ji. नहीं है? Zone 11, third is zone 11, Dr. Ramashray Singh. AG Dr. Ramashray Singh है क्या? नहीं है? और क्या अवार्ड से निकालेगा? वो तो करेंगे. I'll invite Dr. Day-3 Mukherjee, sir. Membership award announcements. Thank you. This is the figure from 1st July
to 15th of March. And basing on this figure, I'm calling for the maximum number of members inducted. It's a tie. 16 members inducted during this period in 2 clubs, that is Rotary Motihari Lake Town and Jamshedpur West. So I request both the clubs, please come. You both are the joint winner. Rotary Motihari Lake Town and Jamshedpur West. Joint winner first is Jamshedpur West and Rotary Motihari Lake Town. Each club has inducted 16 members. Congratulations and thank you. Second is Chanakya, Rotary Chanakya with 15 members inducted during this period. Rotary Chanakya. No one is from Rotary Chanakya? And third position goes to Rotary Mithila. Mithila has inducted 14 members. Rotary members, no one from Rotary Mithila. Okay. Next criteria is inducting maximum lady members. And in this criteria, first position goes to Rotary Mithila again. They have inducted 9 lady Rotarians. Unfortunately, no one is here. So I'll go to the next. Second highest lady members inducted in 5 clubs. Rotary Motihari Lake Town 6, Lakhisarai 6, Chanakya 6, Gumla City 6, and Jamshedpur West 6. So I request all these 5 clubs to please come. You will get a joint memento. Motihari Lake Town, Lakhisarai, Chanakya, Gumla City, Jamshedpur West. आ जाओ नवनीत, आ जाओ तुम. All 5 clubs are Motihari Lake Town, Lakhisarai, Chanakya, Gumla City, Jamshedpur West. And in the third position, maximum lady member inducted, 5 lady members were inducted. Rotary Begusarai and Rotary Jamshedpur Femina. Each have inducted 5 members. Rotary Begusarai and Jamshedpur Femina. Anyone from these 2 clubs? No one. I think Jamshedpur Femina.
Congratulations, all the clubs who has achieved. And thank you for the. Thank you very much, sir. Take. Now coming to the maximum registration from the clubs award. The first prize goes to is it Jamshedpur Steel City? Who said no? It goes to Jamshedpur West. The maximum registrations from a club goes to Jamshedpur West. हमें बहुत तकलीफ हुई जब हमने स्टील सिटी बोला। आपको मालूम है मैं स्टील सिटी का हूं और आप सब बोलते हैं नो। खुश करने के लिए हाँ बोलते थे। The second for the maximum registration from clubs, Rotary Club of Saran and Rotary Club of Jamshedpur. Rotary Club of Saran and Rotary Club of Jamshedpur, second maximum registrations. And the third maximum registration, Rotary Club of Patliputra. Rotary Club of Patliputra. सर एक मेंबर आइए क्लब से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टेज में थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया है। सारन, जमशेदपुर सेकंड, थर्ड पाटलिपुत्रा एंड जमशेदपुर कंबाइन। सारन के एक सदस्य आ जाइए। सारन स्टेज पर तभी आता है जब स्टेज पर और कोई नहीं रहता है ना सारन जी? सेकंड के लिए टाई है सारन और जमशेदपुर के बीच में। सारन आ जाइए, आपका मैं अवार्ड भेज दूंगा कुरियर से। हाँ, okay, so thank you very much. हो गया दीपाली, हो गया सारन का, हो गया। अच्छा खत्म करो ये थोड़ा बाबू। हाँ ये हो गया। रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड। रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा हैज कम। Can Todi ji come? JP Todi, President, Rotary Club of Patliputra. Third prize for the maximum registrations. JP Todi ji and Shilpi ji receiving for the third maximum registrations for the conference. So thank you very much. We can all now vacate these. Can you all vacate the stage except Pratim and Suchanda and Chirag? We have to stay back, I know that. Na? But can the rest please clear the stage? We have got a cell phone, it was fallen somewhere. एक मोबाइल फोन मिला है, किसी का हो तो आप आके ले जा सकते हैं। ये लॉक है तो मैं जानता भी नहीं हूँ किसका है ये। चलो चलो हमको शुरू करने दो। उतरो ना, उतरो मत, ऊपर ही रहो। So, मामला सब आहिस्ता आहिस्ता we are going to come to a closure, but this is a wonderful moment. आप लोग भी हमारे साथ सहमत होंगे that all this good work, hard work,
सारे सब अपना दिल जान ताकत लगा के I wish to thank me and Suchanda, and I suppose I represent everybody on the earth, to thank Rotarian Deepak Dokania as the chairman of the conference. दीपाली जी कहाँ गए अर्धांगनी? हमने उनसे परमिशन ले ली थी कि उनको चेयरमैन बना रहे हैं हम. आइए. अब जितना इन्होंने किया उतना वी हैव ऑल्सो टू थैंक रोटेरियन अंजनी निधि जो हमारे कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी थे. वह कमाल के इंसान है सर. यूँ कभी कभी लगता कि वो ना होते तो मामले अधूरे हो जाते. आपने जितना भी कॉन्फ्रेंस का प्रमोशंस देखा था सब इन्होंने ही बनाया है. हमने किसी कमर्शियल से हेल्प नहीं दी है. सारे प्रमोज इन्होंने खुद बनाया है. आप लोगों ने सब ने ग्रुप में देखा होगा. I cannot miss out Alokananda Bakshi and of course Amitav, जो उन्होंने this all that they have done for the conference. So much of ideas, thoughts, support, help, phone calls, हर चीज में I think we all owe a lot to them for the success of this program. राजीव, मेरे प्यारे बंधु, राजीव तलवार, क्या बात है. देखिए इस वक्त में राजीव तलवार has been the chairman of the खाना पीना कमेटी. आप सबको ये जरूर मान रहे होंगे कि उन्होंने बहुत कुछ किया ताकि हम लोगों को खुश रखे, हमारी प्यास को बुझाए, उधर के भी ख्याल रखे, पेट भर के खाना भी खिलाए, उससे भी कि इतनी तकलीफ हो जाए कि हम सोने की मूड में आ जाए. थैंक यू राजीव. राजीव आप शायद नए हो, बट अगेन लेट अस पुट इन रिकॉर्ड दैट ही इज somebody who was very valuable for this program. और वाह सर, आपको तो सबको ही, आप तो जानते ही होंगे उनको. पहले तो उनका दरवाजा खटखटाया आपने. कमल मकाटी एंड रक्षा ऑल्सो. सारे रजिस्ट्रेशन का जिम्मा इनका था. चुन चुन के हर अठन्नी चवन्नी का हिसाब मिला दिया अब तक. सो ही इज बीन वेरी गुड. ये हमारी ऐप बनाना, बैंक के साथ लिंक करना, रिकंसिलिएशन करना, ये सारी भारी बात इन्होंने हंसते हुए पूरे सारे काम को किया. प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज. आशीष दास, हमारे रोटरी आशीष दास, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कितनी एफिशिएंटली हम लोगों को सारे जगह घुमाया, भुवनेश्वर से लाया, अब पहुंचाने वाले भी हैं. लोकल हमारे जितने सारे रिक्वायरमेंट्स थे, क्या बारीकी से उन्होंने किया. आशीष दास नहीं है क्या आप? थैंक यू आशीष.
मुरली, आप, he is one guy, he was, वो assorted support बोलते हैं ना, सब जगह थे. His presence is there. कई लोग, मैं खैर मैं खुद नहीं मानता हूँ, but lot of people say हमारे डिस्ट्रिक्ट के हनुमान है. मगर I don't think I have a different version of him. Our PDG Ronald DeCosta, are you here? He's gone, but he had been very valuable as a past district governor, of being from Jamshedpur, of all his knowledge and wisdom. Rather, he has been putting in our speakers in his premises of Hotel Boulevard. He gave us the premises for our weekly and daily meetings. What an awesome person he is. He continues to share his support for Rotary 3250. ये सारे नाचन कूदन लाइट डिनर ये it was all possible because of our dear Rotarian Smita Parekh. She has curated this program. It was she who has, ये सारे उनके दिमाग है कि किसको कैसे कहाँ से किस मिक्सचर में लाना है प्रोग्राम को. So Smita ji, you are not there, but again, we really loved the way you have put it. She's there. कहाँ है तो आ रही है. Hey, she is there. सब थोड़ी सी ताली लगवा दीजिए सर. Sergeant of Arms, मंजू सिंह, बहुत मेहनत कराए हम आपसे. आइए आइए. Sergeant of Arms responsibility is huge. सबसे most important है कि कुछ भी हो जाए, मारपीट हो जाए, आग लग जाए, Sergeant of Arms को हंसी मुंह रहना हो. That is the first qualification. And that is why we selected her. And how can we miss and disregard or overlook our dear and dearest Annu Narang. Annu Narang, मैडम जी आपने क्या कमाल की आज सेशन आपने कंट्रोल किया. We owe you a lot. We are in gratitude and we thank you for all what you have done for today. आज की पूरी सारी प्रोसीडिंग्स बड़ा गड़बड़ चल होने का प्लान ये था. But she took it so efficiently, streamlined things and brought it to the right way. आशीष दा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आशुन. अरे फिर देखिए अभी भी ड्यूटी में लगे हुए हैं, फुर्सत नहीं है हमारे पास आने के लिए, क्योंकि किसी को कहीं से कहीं पहुंचाना है उनको. आइए सर. एक ऐसा है वक्त हमारे बीच में, ये सारे जितने ये अभी भी जो चल रहा है,
He is the mastermind. He is the person who is operating it. शायद ही उसको निकाल पाए कि नहीं. उत्पल दल, our उत्पल जी, आइए आइए, हाँ आए गए. सर पे बाल कम हो तो चमकता वो दिख जाता है. आइए उत्पल दा, बहुत मेहरबानी आपने सारे हम लोगों को वहाँ पूरे प्रोग्राम में ये सारे विजुअल्स को कंट्रोल किए. बहुत मामलों में उन्होंने डिज़ाइन भी किया है. So all this part has been taken care of him, and we are really thankful for all his services, support and time he has extended. And of course, Anurag Patra, our Rotarian from Rotary Club of Dalma. Anurag, are you there? I personally want to thank you for all the time and all the technical inputs आपने दिया. ये एक सब्जेक्ट है, सारे कोई लोग जानते नहीं है. बस आप थे, हमको निश्चित किए, और क्या बढ़िया से हमारी डिस्प्ले, हमारी ऑडियोज, we have all done it so nicely. आइए अनुराग, you are all sweaty, so I'll love to at least shake my hand with you. Come up. पसीना पसीना हो गया. My dear Rotractors, क्या चुपके से कितनी मेहनत आपने किया हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए. We all owe a lot of thanks to the Rotractors who all come from Jamshedpur. Please, I would like them to come up one by one and acknowledge for all the support and help and the time they have extended for the success of this program. आइए आइए आइए. So a last thank you to all the presidents, 7 presidents of the clubs of Jamshedpur. Thank you for all the participants जो इन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया representing their clubs. थोड़ी सी वक्त दीजिए, हम आपकी सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुँचा देंगे, क्योंकि हम जान नहीं रहते कि आपकी नाम, तो बढ़िया से काम करने के लिए थोड़ी सी वक्त दे दीजिए हमको. So thank you very much for all the participants जो अपने स्टेज पे आए या so thank you very much. I सबों को 3 बार मैं थैंक यू कर रहा हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
मनीष जैन भी एक बड़ा अद्भुत आदमी है. Very unfortunately, जो हमारे he is a treasurer of the district, मगर मनीष आ नहीं पाया because his father is not well. तो ये परम बनता है कि उनके अपने फादर के साथ रहना, बट उनका मन, दिल और मोबाइल हमारे is always connected with us. ये सारे जो मनी मैनेजमेंट है, we have to thank Manish Jain of Jamshedpur, Rotary Club of Jamshedpur East. So let us thank him for all what he has been doing. और बहुत काम बाकी है उनके लिए. Thank you very much. Friends, I think this thank you will not be enough until and unless we talk about our district governor, Rotary Pratim Banerjee and First Lady Suchanda Banerjee. I think both of them are the real drive behind this conference. I've seen this, I was made a part of the advisory committee. Basically, he didn't want me to do any work, so I did nothing. But I've seen the ups and downs that has gone through, what he was expressing yesterday. But he is one man who was standing rock solid. हम करेंगे, पूरी में करेंगे, सबके साथ करेंगे और सारे लोग मिलके एंजॉय करेंगे. Thank you from our bottom of our heart, Pratim and Suchanda, and of course, Rotarian Deepak Dukania and his lovely spouse. Anjani and Jhuma, please. Three cheers to Jamburi. Hip hip! Hip hip! Hip hip! आप जाएं नहीं क्योंकि जलवा अभी बाकी है और लेट मी टेल यू दैट बहुत ही जल्दी इस स्टेज पे एक धमाका होने वाला है जिसका अनाउंसमेंट कल हम लोगों ने किया था. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगला ये कुछ जो पल आप बिताने जा रहे हैं वो है संगीत और गीत की महफिल, जिसमें हमारे अपने IFRM के स्टार सिंगर राजेंद्र सचदेवा जी who will break the ice for the musical afternoon, and thereafter, friends, we are going to have a very sensational singer, Arpita Sarkar, who has come all the way from Calcutta, and इनका इंतज़ार कल से हो रहा था. She is a young cute girl, and हाँ, राजेंद्र के साथ हमारे इनका सतनाम में असल में सत लगा हुआ है. आइए. Thank you so much. Now this is the next announcement, but as per the agenda, myself and Deepak had to give our आभार. उस आभार में I, on my behalf and on behalf of Deepak,
We also thank all the committee members, जिन्होंने दिन रात काम किया था इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल करने के लिए. So, Dipali, Juma, they also join us for thanking all the committee members, their spouses, family, who supported, and the entire team worked. They have burned the midnight oil, I know, and it is because of the love and affection of the members that we could make it so successful. Thank you. So stage is now to Rajendra ji or Satnam ji. Anjali, they'll just take 2 minutes to set up. Yeah. Just take 2 minutes to set up. We will take just 2-3 minutes more. There is an announcement once again. Those who have trains in the afternoon or leaving by car can pick up their packed lunches, and those leaving by evening train can pick up their dinner box, which are ready in the dining hall area. Another request for the guests who are staying here, please settle your bill for extension of the last day, which was announced earlier. Hello. Now, since the our formal meeting of the conference has come to a formal end, so we will have Sergeant at Arms announcement by Rotarian Manju Singh ji. Rotarian Manju ji, आइए. Jai Jagannath. Good afternoon, everyone. Sergeant at Arms report. Attendance, Rotarians present was 386 for last 3 days. Spouse 125 and Rotary led. Check. चार नंबर बैठ चुका. Check. Good. अरे भेज दिया. मॉनिटर दिया, मॉनिटर रेड है और येलो रे पड़ी. कीबोर्ड काउंटर शो हो गया.
हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। हो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। हो लेके पहला पहला प्यार। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। मेरा नाम चिन चिंचू, चिन चिंचू बाबा चिन चिंचू। रात चांदनी मेरा तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिंचू, चिन चिंचू बाबा चिन चिंचू। रात चांदनी मेरा तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा, कभी यार कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार लगाती है नजर। सही घायल किया रे तूने मोरा जिगर। चांदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदवी का चांद हो। छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, आहा छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। आहा इन अदाओं का ज़माना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओहो छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। आहा इन लगाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओहो छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना ना
सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे जरा देर से जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे मैंने तुझे जरा देर से जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी तेरी नजरें तो गिला करती हैं मेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान मैं फिर ऐ शमा फिरती हो कहाँ मैं फिर ऐ शमा फिरती हो कहाँ अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ जला कर जो छुप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ थैंक यू हेलो थैंक यू सो मच till we meet again we have one more song request चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना
हमें दिल भर, बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, बीच राह में दिल भर, बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। जय जम्बूरी, जय जगन्नाथ। Okay, we have another deadly singer today from Calcutta, Arpita Sarkar. Arpita ji, can we have on stage please? Hi, check, hello, check. So I'll take a few minutes for the sound check. Hello, check, hello. थोड़ा सा लो और मिड बढ़ाइए. Check, 6 hello. थोड़ा लो और मिड बढ़ाइए या चेक 6 हेलो 6 हेलो लो बढ़ाइए कीज थोड़ा सा कम कीजिए, कीबोर्ड थोड़ा सा कम कीजिए, वोकल मॉनिटर में. ओके फाइन. ओके सो नमस्ते, नमस्कारम, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन. कैसे हो आप सभी? इतने अच्छे से मजे कर रहे थे, यहाँ से इतना झूम रही थी, मतलब देख रही थी जो परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे. सो मैं चाहती हूँ सब मिलके एक बार जोरदार तालियां हो जाए एक साथ, एवरीवन, पीछे से भी. थैंक यू. सो यहाँ पे आप लोग बताओ कि नए गाने या फिर पुराने गाने सुनने वाले ज्यादा हैं? पुराने कॉकटेल. ओके, ये आपने नया जॉनरा आज डिस्कवर किया है, मुझे नहीं पता था ऐसा कोई जॉनरा. ओके देन लेट्स गो. दादा वोकल दीजिए इधर, सिंगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो कैसे बजाएगा? हेलो चेक, हेलो वोकल मॉनिटर बढ़ाइए. सॉरी वोकल मॉनिटर नहीं, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट का जो मॉनिटर है वहाँ पे वोकल बढ़ाइए और वोकल थोड़ा सा लाउड कीजिए वोकल मॉनिटर में. हेलो चेक, वोकल मॉनिटर में लाउड कीजिए, थोड़ा सा क्लियर होगा वर्ड्स. चेक, हेलो, ओके. चेक, थोड़ा सा रिवर्ब ज़्यादा हो गया.
check, hello. Okay, okay, cool. Check, hello. Check, hello. Check, hello. 6, hello. Check. Okay. Check, hello. Check, hello. Okay, fine. Hello, check. Okay. Okay, we are facing some technical issues, so we'll take few minutes. Please hold on. Check, hello, check. 6, check. 1, 2, 3, check. Yes. Check. फीडबैक ले रहा है थोड़ा सा. Okay. Check, check, hey, check. इंतहा हो गई इंतजार की. थोड़ा सा